Hello everybody, welcome to one and only Professor Kalinga. आज हमारे साथ जो हैं the man who doesn't need introduction, senior sports journalist with Times of India, Hindustan Time, TV Today, and Newsx, and have contributed Indian football with AIFF as director communication and chief spokesperson, where he served as a team media officer for almost 550 national matches. So welcome Niranjan sir. कैसे हैं निरंजन सर? प्रोफेसर साहब नमस्कार, थैंक यू, नाइस टू बी बैक ऑन योर प्लेटफॉर्म। इतने इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं है, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज यू आर एन ओल्ड फ्रेंड एंड मच मच इंडेटेड टू यू फॉर योर हेल्प, व्हिच यू आर अवेयर ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट। सो लवली टू बी बैक ऑन द प्लेटफॉर्म, लवली। एंड बाय द वे, मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया। नाउ बोल दादा बोल के कंटेंट क्रिएटर निरंजन दत्ता। सर जी, बोल दादा बोल के पीछे आपकी हाथ है, आपने ही धकेल दिया इस बोल दादा बोल की कंटेंट करने के लिए। दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग आई वाज इंडेटेड टू यू, क्योंकि ये बहुत किसी को पता नहीं है। यू पुश्ड मी इनटू एंड सेड कि अरे दादा करिए सर जी, करो करो करो, तो बस टाइम पास चल रहा है और क्या। एंड आई डू लुक एट योर शोज टू, सो ऐसे बात नहीं है सर उज्जवल भाई। God Thank bless. you. And Indian football needs you. Indian football new youth fan needs you, because fan education is something which we are going to discuss in a later part of this stream. That is very important, because fan education, without fan education you can't support your club or country very well. So fan education is always must, and India, specifically Asia, the fan education is something missing, which you will be helping us in No, your through your YouTube channel. I kind of disagree a bit. It's not just me, but each and everyone, including yourself, your good self, some other very prominent YouTubers, some other fresh faces who have been there on the platform of YouTube and any other digital social media. Obviously, fans are emotional, they get carried away. So it's not just me, it's all together in the family. And as we used to say and still say, forward together. True. Okay, then हम बात करेंगे टुडे ऑन द पीआईओ एंड ओसीआई प्लेयर्स, मोस्टली फोकस वहां पे करेंगे और वो देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारे, और वो लोग आने के लिए, मतलब ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स आने के लिए ट्राई करें, मतलब आने के लिए रेडी हैं क्या, व्हाट आर द हर्डल्स, हाउ कैन वी सॉल्व इट, एवरीथिंग जो है सर जी से बात करेंगे। और सर जी जो है हमें ना थोड़ा डिटेल में बोल सकते हैं। रीजन इज दैट ही हैज बीन इनटू दिस सिचुएशन मल्टीपल टाइम्स इन हिज कैरियर विद द एआईएफएफ, क्योंकि एआईएफएफ के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। सो उनको पता है कि ये सिचुएशन किस तरीके से आते हैं, एएफएफ कैसे रिएक्ट करता है और होता क्या है, पूरी पूरी डिटेल ब्रीफ हिस्ट्री बोल सकते हैं कि वो बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीम, एंड प्लीज प्लीज गो टू द पिन कमेंट, जहां पे मैंने बोल दादा बोल की जो है लिंक प्रोवाइड किया है। सो आप जाके वहां पे क्लिक करके बोल दादा बोल को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड you want to learn more about Indian football, you want to understand more about Indian football history, heritage, everything, you have the right channel, which is Bol Dada Bol. So go and check it out once again, and if you like, don't forget to subscribe it. Okay, पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि can players from Indian origin play for India? थोड़ा कंफ्यूजन है बहुत जगह पे कि कुछ प्लेयर्स है, जैसे हमने इसके बारे में बात किया था, रॉय कृष्णा के बारे में बात किया था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रॉय कृष्णा क्यों इंडिया टीम में नहीं खेल सकता, ही हैज स्कोर्ड दिस लास्ट यस्टरडे फॉर द ओडिशा एफसी। तो ये सब चीजें ना कंफ्यूजन है और कहीं पे क्लैरिटी ठीक से नहीं है, एंड एवरीवन टॉकिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो वुड लाइक टू क्लैरिफाई फ्रॉम यू सर। सर देखो उज्जवल भाई, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू प्ले फॉर एन इंडियन पासपोर्ट, इंडियन national team is you need to have an Indian passport. It's as simple as that. चाहे आप रॉय कृष्णा के बारे में बात करें या some other PIOs के बारे में बात करें, जिसके बारे में सोशल मीडिया में we keep on talking about them. I'm not doubting the quality of some of the players. Obviously, we understand that they are much better quality because they have been born and bred in a better footballing environment than our Indian players. So the first and foremost requisite for them is an Indian passport. We as fans, because both of us are fans at the current moment, okay, we as fans will like it or not. Law of the land एक है हमारे देश में, वो सरकार की लैंड है, पहले से भी था, 2008 से है। तो आप खेलना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, acquire or procure an Indian passport,
and make yourself eligible to play for India. We may go to the extent of saying, oh, here, see, Bangladesh में बहुत सारे PI, but not PIOs, players of Bangladesh origin, Philippines में खेल रहे. The people are tweaking that rule to their own advantage, lot many countries, very rightly so. But हम लोगों के पास वो advantage है नहीं, और हम लोग के लिए we need to have the passport. Unless we have the passport, all talks are futile. And some of the players who have already played international football, they are not eligible even if they have an Indian passport out there, because they have already represented. Uska complications zyada hai. So the best way to do it is whoever wants to play, acquire and procure an Indian passport. We understand the process is long, but that's what the law of the land is. Simple, एकदम लॉजिक यही है. और यदि कोई आज मैं इंग्लिश पासपोर्ट लेना चाहता हूं, फ्रेंच पासपोर्ट लेना चाहता हूं, हमें एकदम एम्ब्रेस करके आपको, हमें या जो सारे फैंस है हमसे मच मोर क्वालिफाइड इन द सेवरल डिसिप्लिन्स, लोग नहीं लेगा. यू नीड टू स्टे इन द कंट्री फॉर ए मिनिमम टाइम, you need to maybe invest in their country, you need to get married to someone. There are certain laws which we need to abide by them. हम इंडियंस वहां पे चुप, कुछ नहीं बोलते हैं, सब रूल्स मान लेते हैं. हमारा देश में क्या वर्ल्ड कप ले खिला देगा पीआईओ जाके? I'm not saying they're bad players. If they were so good, why are they not playing in their country of origin, in which the country they are residing at the current moment? They also have an ambition of playing international football, don't they? But as we need to understand that what percentage of the PIOs get into the national team of their country of origin, that answers quite a lot. एक चीज पूछना चाहूंगा इस पे कि बहुत से हमारे इंडियन फैंस की क्वेश्चन रही है कि गवर्नमेंट इस पे रूल को जो है ट्विक नहीं करने दे रहा है, या गवर्नमेंट इसको थोड़ा हमें हेल्प नहीं कर रहा है. डू यू थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट फुटबॉल को हेल्प कर सकता है, और शुड बी नेशनल सिक्योरिटी इज और नेशनल सिक्योरिटी, और द पॉइंट यू मेड कि भाई हर कंट्री में आप जाओगे तो सर्टेन रूल्स आर देयर, सो दैट नीड्स टू बी फॉलोड, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फुटबॉल or bring a PIO player to help the football, Indian football is more important. What is the more important for us? देखिए, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, हम पसंद करें कि ना करें. जस्ट टू रिआइट्रेट माई सेल्फ, वी नीड टू स्टिक बाय इट, नंबर वन. नंबर टू इज की गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट इंडियन फुटबॉल एट ऑल. 2008 में गवर्नमेंट का जिक्र की. 2008 में देयर वाज अ डिफरेंट गवर्नमेंट एट द सेंटर व्हेन द डुअल पासपोर्ट रूल वाज एबोलिश्ड. Now, yes, since 2014, we have a different government at the center, and the dual passport rule has not been revived at all. अब बहुत सारे policies revive किया गया या नहीं किया गया है. If you look at that purely, and to change it, ये कोई फुटबॉल के लिए चेंज नहीं हो सकता. It needs to apply to across to all sports. There needs to be a law passed, debate in the parliament, a law passed in the parliament. Various ministries like the Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense, various सारे ministries को इसमें involve होना पड़ेगा. And then they can maybe, if they feel कि जरूरत है, for the benefit of the country, for the sake of the country, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट, हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी रहे, they work for the betterment of the country. ये हम माने ना माने, शायद हम करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करें ना करें, हम 2008 की गवर्नमेंट को सपोर्ट करें ना करें, वो अलग इशू है. दैट्स अ फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन. लेकिन जो किया गया था देश के भलाई के लिए किया गया था. आज जो किया जा रहा है वो भी देश की भलाई के लिए है. तो गवर्नमेंट उसमें करना है तो दीज आर दी प्रोसीडियर्स. और सिर्फ फुटबॉल के बारे में क्यों बात करें, जो बात मैं हमेशा बोलता हूं कि 2008, इफ यू लुक बैक, उस समय ये एबोलिश किया गया था बिकॉज देयर वर सर्टेन प्लेयर्स फ्रॉम स्क्वॉश एंड टेनिस जो रिटन कंप्लेंट दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, द देन स्पोर्ट्स मिनिस्टर द लेट मिस्टर एम.एस. गिल को, कि there are certain players of Indian origin who stay abroad. All throughout the life they are citizens of some other country, but they are not good enough to find a place in their country of origin. And at that time, very conveniently for the Davis Cup or international tournaments, they turn Indians, come here, play for the country, and then what do you say? We lose our place. They even had pointed out in the letter, I believe मेरी laptop पुरानी files में रह जाएगा, मिल जाएगा वो letter, कि all those players have not helped us to win a Davis Cup at all, or maybe take us to the next stage of the Davis Cup or the other tournaments. So क्यों? Homebred players need to be given a chance. उस हिसाब से गवर्नमेंट ने मना किया था. अब 2008 का स्पोर्टिंग सिनेरियो से आज की स्पोर्टिंग सिनेरियो यदि आप ले लेंगे, 2008 इंडियन स्पोर्ट्स, वी वर ए नोविस. हाँ, हम कितनी ओलंपिक मेडल्स जीते थे उस टाइम तक,
हम लोग कितनी वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतते थे, बाकी स्पोर्ट्स का कितना एनकरेजमेंट था, बाकी स्पोर्ट्स का कितना स्पोर्ट्स पर्सन, आइकॉनिक स्पोर्ट्स पर्सन था, आप गिन लीजिए। 2023 द सिचुएशन हैज चेंज्ड, इफ नॉट इमेंसली, टू अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। गवर्नमेंट सपोर्ट आ रहे, अनथिंकेबल हो गया कि एक नीरज चोपड़ा जैसा लड़का आके हम लोग को जैवलिन पे गोल्ड जीत के एथलेटिक्स में वर्ल्ड चैंपियन बन गया था 2008 पे, अनथिंकेबल था। और इंडिया से सोसाइटी आप देखेंगे, बोलेंगे कि हम लोग कभी वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड जीत सकते, बोलेंगे नहीं जीत सकते, बट वी हैव अचीव्ड इट विथ होम ग्रेड यस प्लेयर्स। तो सिर्फ फुटबॉल को क्यों चाहिए ये प्लेयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन? एथलेटिक्स तो नहीं बोला, ट्रू टेनिस ट्रू तो नहीं बोला, ट्रू हॉकी तो नहीं बोला, स्विमिंग नहीं नहीं बोला बोला, शूटिंग। नहीं बट इफ दे आर डूइंग वेल, इंडियंस आर डूइंग वेल, 100 पार किए एशियन गेम्स में इंडियन रेड प्लेयर्स। खेलो ट्रू इंडिया, आई एम नॉट, डू नॉट हैव एनी एलिजेंस फॉर एनी गवर्नमेंट। हाँ, मेरा पॉलिटिकल इडियोलॉजी कुछ भी नहीं है, एलिजेंस कुछ भी नहीं है, बट रिजल्ट्स ऑफ सर्टेन स्कीम्स आर विजिबल इन द मार्केट। तो ट्रू हमेशा हम वेरी कन्वीनियंटली हम बोल देते हैं प्लेयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन चाहिए, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा है। तो दैट्स द सिचुएशन जो हम लोग को एड्रेस करनी है। बाकी स्पोर्ट यदि आगे आ सकता है, व्हाई नॉट इंडियन फुटबॉल टू काइंड ऑफ ग्रूम प्लेयर्स? ये मेरी श्योर पर्सनल थॉट है। यस I यस may be right, I एब्सोल्युटली may be wrong. Everyone has a एब्सोल्युटली personal thought, and if you ask यस me, that's my personal thought, my Uchal bhai. personal thoughts. Absolutely, I agree with you. And one more question. If for example, के हमने पीआईओ प्लेयर्स को लाने के लिए प्लान भी कर लिया और सब कुछ सेट भी कर लिया, डू यू थिंक विथ करंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने बताया, और हर कंट्री में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पीआईओ प्लेयर जो हैं अवेलेबल, ऑब्वियसली जो यूथ में है, क्योंकि वो जो भी सीनियर टीम में कोई भी इंटरनेशनल टीम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 2 से या 3 से जो भी मैचेस हैं, तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओनली यूथ प्लेयर्स वो आ सकते हैं। सो डू यू थिंक जो पीआईओ प्लेयर्स अवेलेबल है, आर दे रेडी टू सरेंडर देयर पासपोर्ट एंड कम? सो इसमें सिंपल एक ट्विक देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द पीआईओ प्लेयर एंड यू आर प्लेइंग इन द ब्रिटेन, एंड ब्रिटेन के सेकंड लेवल या थर्ड लीग में आप खेल रहे हैं, वुड यू, हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट एज ए प्लेयर, पीआईओ प्लेयर? आपका क्या राय रहेगा? देखिए, ये तो ऑन द सरफेस इफ यू आस्क मी ब्लेटेंट ट्रूथ है कि नो। हाँ, each and every PIO who has been very conveniently using the Indian media, the digital platforms and the social media and the fan clout of social media of Indian football over Indian football only says abolish the dual passport rule, we are willing to play for India, we want to serve my country. हाँ, आपका कोई कनेक्ट नहीं है व्हाट डू यू से आपकी इंडिया से। फॉर एग्जांपल, माय इनहैबिटेंट्स केम फ्रॉम बांग्लादेश। इफ यू ट्रैक बैक माय इनहैबिटेंट्स, I come from Bangladesh, my family hails from Bangladesh in a place called Borishal. Because partition of India mein Punjabis and Bengalis came over. It's a different story. My grandfather came much ahead before the partition, but my ancestral root is to Bangladesh. I've been to the ancestral house in Borishal. My parents have been there, my families have been there, they have come over. But if you ask me, there's an emotional connect. I feel emotionally for Bangladesh. If you ask me to surrender my Indian passport and opt for a Bangladesh passport, sorry, I won't. If any Punjabi is asked to surrender his Indian passport, go to Pakistan, he or she won't. एक इमोशनल कनेक्ट रह सकता है, जो हम लोग बांग्ला में पैतृक भिटा कहते हैं, एंसेस्ट्रल हाउस। हम लोग कैसे थे, इतनी कहानी सुने, व्हाई नॉट? हाँ, दैट्स ब्रदरहुड। बट सरेंडरिंग ए पासपोर्ट, नो। ब्लेटेंट लोग ना बोलेगा नहीं भाई साहब मैं तो खुश हूं। आज के दिन पे लोग, आप भुवनेश्वर से बाहर हैदराबाद में, भुवनेश्वर या उड़ीसा से हैदराबाद में, कैलकाटा से दिल्ली आके बैठा हूं, हम दिल्ली से आज हमें बोले, जस्ट गिविंग ए हाइपोथेटिक या एग्जांपल, यू गो टू चेन्नई, आई एम गिविंग यू जब, मैं 10 बार सोचूंगा अपना ओन कंट्री में शिफ्ट करने के लिए। और यहाँ आई पे एग्री। फैन बिलीव कर लेते उस पीआईओस को जिसको जिंदगी में देखे नहीं है, कि उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल, देयर आर टू पैराडाइम्स। हाँ, ट्रू प्रोफेशनली मेरे साथ जब जितने कुछ लोगों का बात हुआ, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स बिकॉज दे हैव कॉन्फाइडेड टू मी इन प्राइवेट। यस दे सेड, okay, I'm 25, 26, 27. Aim is to play international football. More than that, can India go to the World Cup? This is how the या conversation या happened with them. Can ट्रू India go to the World Cup? They said, Nilanjan, one player cannot make a difference in football. Are the other 10 players good enough who can support me? I can make a difference. But would the same difference be created by the other 10 players? I see that not happening. So राइट we need a clout of 5, 6, 7 foreigners. Foreigners in the sense the players of Indian origin coming in and then plugging in the best of available talent from India and
playing and taking India to the next level. Now, हर 4 साल में वर्ल्ड कप क्वालिफाइज होते हैं, they are growing older. So आज के दिन में जो 27 है, उसका 3 साल या 2 साल प्रोसीडियर होएगा आपकी पासपोर्ट लेने के लिए. By that time is already 32. There's no guarantee India makes to the World Cup of 36. It's a body contact sport. उनकी फॉर्म, उनकी मेंटल एप्टीट्यूड चेंज हो सकता है. That's professionally. For the time he surrendered, applied for an Indian passport, he has to play in India because उनको इंडिया में रहना है. इंडियन क्लब को उनको रिक्रूट करना है. हाँ, so from the personal side point, the quality of life, his friends, his clout, जो socializing है, जो social gathering है, he needs to sacrifice all of that for those kind of 4 years for which he is gambling. Because 21-22 साल में टॉप PIO तभी भी सोचता है कि मैं तो इंग्लैंड खेल लूंगा, मैं तो स्कॉटलैंड खेल लूंगा, मैं तो नेदरलैंड्स खेल लूंगा, and for all the right reasons. I'm not blaming them. Michael Chopra in 2002 was given an offer by Stephen Constantine. I still remember it. He wanted Michael to come over and play for India. At that time, the dual passport rule was allowed because Stephen felt that Michael Chopra and Baichung Bhutia at the helm up front would not just be deadly, they would be one of the most lethal combinations in entire Asia. He had said that many times on record. Michael Chopra at that time was playing for Newcastle United. He had dreams, obviously. He was a very quality player. And there was a video of him where he went past Rio Ferdinand, who knew a bit of defending. And that clip, despite social media not being there, went viral. It's unfortunate Michael couldn't make it to the English team. Again in 2011, for the Asian Cup, the dual passport rule came into place. Bob Houghton went all out to recruit Michael Chopra. Michael said no. He still had time. So, बोलना आसान है सोशल मीडिया का, I want to pay back my country. आपको करके दिखाना है. वर्ल्ड दुनिया वही होता है कि ना, दो टाइप ऑफ लोग होता है कि मैं जो बोलूं आप वो करो, और मैं जो करता हूं वो आप भी करो. भाई आप भी तो करो, क्योंकि if you look on the surface, I don't see any European in the sense, maybe a player of Indian origin of a different passport surrendering their passport and coming over to play for India. A. B. I even had chats with many Asian and African players who were playing in the I-League and even in the ISL, more in the I-League. Very prominent names. All of them listened several chats on a personal level, not on an official level. I was a journalist at that time. But each one of them politely declined. I'm very happy with my country. And some of the countries say India provides a much better quality of life. Arata Izumiism, a different concept. My full respect to Arata. He gave away his Japanese passport and applied an Indian passport. He's living here. He's played for the country. He's coaching here. He's played India. Oh, that's a different rare case. We felt that would open up a Pandora's box. But unfortunately or fortunately, it hasn't. Okay. Almost 40 to 50 Indian fans are watching right now. Please like it. लाइक करेंगे तो बहुत ज्यादा इंडियन फैन के पास पहुंच जाएंगे. और ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये फैन एजुकेशन विल हेल्प टू नो कि OCI प्लेयर हमारे लिए और PIO प्लेयर हमारे लिए कितना यूजफुल होगा, और उसके बिना हम कैसे सस्टेन करेंगे, वर्ल्ड कप जा सकते हैं, और क्या क्या हर्डल्स है, द रियलिटी एंड द रियल पॉइंट्स व्हिच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम निरंजन दत्ता डायरेक्टली फ्रॉम his opinion live, and you can ask those questions related to that. So please go and check it out and ask those questions. And again, बोल दादा बोल को भी सब्सक्राइब करते रहो. ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे आपने बताया कि PIO प्लेयर्स को उनको खुद को अपनी लाइफस्टाइल, अपनी फैमिली, अपनी पूरी करियर को दांव पे लगा के इंडिया में आके खेलना इतना बहुत इजी नहीं है. इट्स ऑलवेज ए डिफिकल्ट. अगेन ये 1-2 साल नहीं, 3-4 साल का मामला है. एक चीज एक पूछना चाहता हूँ, इज ऑल्सो इन क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द माय सब्सक्राइबर है आस्क्ड इट, कि भाई फॉर एग्जांपल यू आर द PIO प्लेयर, ओके, आपको 2 साल यहाँ पे आके आपको यहाँ पे रहना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है. सो कैन इंडियन सुपर लीग के टीम्स आपको ऑफर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू प्ले हियर एंड स्पेंड टाइम, सो दैट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी हैप्पी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा. मतलब now 4 players, right, 4 foreigners are there allowed in ISL, right? So we can put a rule saying that PIO players भी आप रख सकते हो, okay, in to encourage team.
encourage team and encourage people to come and spend time here. Do you think this will work or this is not going to work मेरे हिसाब से? Because वो प्लेयर को यूरोपियन खेल रहा है, वो लेवल पे खेल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो आए ड्रेसिंग रूम में शेयर करे अपना एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन एक्सपीरियंस एंड the coaching style and everything. But if he's going to play in India itself and spend time, which we already having a lot of youth player who is doing it, so how it is a different, like my opinion, but I would like to hear from your opinion. See, the clubs need to offer him. First of all, the clubs need to be convinced. हाँ, we fans always say कि अरे इसको लेना है उसको लेना है. हम भूल जाते हैं कि किसको लेना है ये तो क्लब्स के ऊपर डिसाइड करेगा, चाहे वो सही है गलत है. हाँ, so are the clubs willing to risk players of a PIO in their club? Number one. Number two is not all PIOs would be of the same quality. Yeah. So for example, taking just one name, if a Danny Bath comes into play, given his credibility and given his stature, he's of a different level, different quality, but not every PIO is a Danny Bath or Michael Chopra at his prime. So how can you expect any ISL club or an I League club to be kind of opening the door or killing a foreigner quota for each and every PIO who are interested in playing for India? You need to be of that quality. The coaches need to get convinced that, okay, this PIO is better than the player whom I am targeting in that specific spot. For example, if a club or 10, 11 clubs have their central defensive quota fulfilled with foreign players, will a coach be risking Danny Bath, just taking a name, to be playing as a central defender? Maybe they won't. So there are a lot many permutations and combinations which would be there, and the club needs to take a call. The coaches and the management and the recruiters need to take a call. It's not that each and every PIO, even with best of interest, if he or he especially, if he comes in, will be getting a chance. For example, Triman Ranveer came over. He applied for the passport, which was very good of him. But obviously the procedure is long. He went back. None of the clubs have gone ahead to kind of offer him a contract. So when the clubs are not offering anyone a contract, we need to understand that the clubs are not interested. Maybe we may be interested. He may be a good player. Sometimes the clubs shy away from taking good players, not willingly, but unwilling means unknowingly they kind of are unable to spot someone who's as good enough. The famous classic case being Sandesh Jingan being rejected by Kolkata second division clubs when he first went to play in Kolkata. Recent example. There have been lot many examples. So in that fashion means the clubs need to decide, and whether they will be, first the PIO needs to be willing to come over, and then the clubs need to decide. But ये नहीं हो सकता कि हर कोई PIO आ जाए, हर कोई क्लब बोलेगा ओ भाई साहब आप आ जाओ, because club football is different from country football. People are spending money and no one is here for benevolence as far as club football is concerned. Okay, and then again I just want to remind everyone, please like this stream यार, टीम को लाइक करो, ज्यादा इंडियन फैन के पास पहुंचेगा. लाइक का टारगेट 100 है. अनदर क्वेश्चन कमिंग इन के या हम लोग पीआईओ ओसीआई प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, आएंगे जैसे माइकल चोपड़ा का आपने एग्जांपल लिया, तो वो आ जाएंगे तो बहुत लिटल हो जाएगा. बट डू यू थिंक विद द करंट सिनेरियो these PIO players which are available right now can make this India team, the current Indian team, into the level what we are expecting? हाँ, बढ़ा better करेंगे, that we know कि वो थोड़ा बढ़ेगा 5%, 10%, 15%. We do, like I can, like I'm expecting your answer, but can we reach to that level which we are expecting, जो कि आपने पहले ही बताया कि वर्ल्ड कप हमने खेलना है, so वहां पहुंचा सकते हैं ये PIO प्लेयर जो अवेलेबल हैं? तभी तो हम फाइट करेंगे ना. पहले तो देख लेते हैं, SWOT एनालिसिस कर लेंगे ना. SWOT analysis gives me kind of takes me back. That was a word हम बहुत use करते थे, बहुत दिन बाद वो बात सुना. See, देखिए, it's a double-edged sword. I won't say double-edged. It's a both side coin which has both sides. This coin has both sides. Unless you play, you are not aware how good is the PIO. क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. देखिए, सबसे बड़ी बात which I need to clarify, which I have clarified even on Bol Dada Bol, is that any PIO surrendering his passport, given the fact that surrender कर दिया, he is only eligible to play for India. कोई गारंटी नहीं है. हम लोग क्या सोच लेते हैं कि कोई भी PIO आएगा तो गारंटेड स्लॉट है. PIO also takes for guarantee कि अरे मैं तो आके इंडिया खेल लूंगा. नहीं भैया, नहीं खेल पाओगे. उतनी आसान इंडिया जर्सी उतना आसान नहीं है. You need to be better than the players. हाँ, you may be better. मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप खराब हो, but surrendering an Indian passport makes one eligible, not guarantees anyone a place in the team.
That's first of all, number one. Number two जो बात है कि whether they are good enough, some of them are good enough. जो प्रोफाइल देख रहे हैं हम लोग, हाँ, मैं इसके बारे में नाम नहीं लेना चाहता हूं, but all of them coming in together makes a difference. As I had said earlier in the chat, some of the PIOs I spoke to have said that, mentioned that, will I be alone be able to make a difference? I won't, because there are 10 players together with me. हाँ, आप 4 फॉरेनर्स को हटा के एक फॉरेनर से एक मैच खेल लीजिए आईएसएल में, मैच की टोटल इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा. ये होता है, बिकॉज दिस इज ए टीम स्पोर्ट. सो उस हिसाब से आपकी one PIO won't be able to make a difference if they come together. Good quality PIOs. I mean, good quality PIOs are PIOs who have groomed themselves, been lucky enough to groom themselves at a very elite level, at a very elite stage, in a very superb domestic structure, and are playing regularly domestic football at a level which is a much more higher in intensity than the Indian domestic context. Regular match time, किसके साथ, which opposition के साथ, then only you'll be able to make a difference. Now, if you play in for example, the top nations, England, Belgium, Netherlands, Portugal, Germany, even if you play in the reserve team, you are much better. First division, you may be of the same standard or maybe a shade better. The second division, absolutely no chance. Absolutely no. You can't be a better than a Sahal or a Jingan or an Akash Mishra or a Liston Colasso or a Brandon Thapa, Gurpreet, leave aside a Sunil Chetri, whoever it may be. So the players need to be chosen by what we want. Obviously, they have to surrender. The coach will be smart enough to choose the best available player. If you look at the PIOs around in the SAF region, Pakistan and Bangladesh play PIOs. They have not been able to do anything significant so far. Pakistan team is not PIO, sorry, players of Pakistan origin. PPO, players of Pakistan origin, PPO. Yeah, Playing like quite at a level. Quite some credibility के साथ, credentials के साथ आता है. Result क्या हुआ है? Nothing. Now, there people may say, oh, they don't have the time, they have not gelled together, but eventually, भाई साहब, result तो आपका नहीं आया. Bangladesh has gone ahead. It's a good step. It's a good step to get in the players of Bangladesh origin, but nothing much has happened. So ये magic wand नहीं है PIOs, कि आपका PIOs हो जाएगा. और इतने PIO हम लोग बात करते हैं. Get a good foreign coach, very good foreign top elite youth coach. ज्यादा पैसा नहीं लगेगा. Set up an academy. Scout players from the hinterland and all over the country at the right age. 4 से 5 साल के अंदर you will be producing much better players than what PIOs you are asking for, at a much lesser cost than the exorbitant transfer money that you are paying and still losing domestic matches. This would be my suggestion, but depends. I'm not part of the management. This procedure has been going on for long. देखिए, इंडियन फुटबॉल 1951 पे हम लोग जीते हैं. व्हाट डू यू से, द एशियन गेम्स इनॉग्रल गोल्ड मेडल. इट वाज प्लेड बाय वेरी लेसर कंट्रीज. 5 कंट्री खेले थे, ठीक है, बट वी won it. 62 हम लोग जीते, which has been our biggest triumph. Since then, have we been able to produce players at that world level? We were at that, almost at the world level. हम ओलंपिक सेमीफाइनल तक जाते थे उस टाइम पे, बट उसके बाद हम लोग का नहीं हुआ, बिकॉज बाकी प्लेयर्स countries have caught up. We are still playing catch up. It's as simple as that. true. One more thing, one question, I'll take it up. ये आपके लिए था. दत्ता सर नेक्स्ट गेस्ट कब बुला रहे हैं बोल दादा बोल पे? Everyone's so excited to hear. नहीं आएंगे भाई साहब. साहिल राणा सर जी, थैंक यू सो मच. आएंगे, बिल्कुल आएंगे. थोड़ी सी अदर कमिटमेंट्स भी रहता है मेरा. जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई साहब. थैंक यू. ये क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ. सो he has been a senior sports journalist with a few big news television news television ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, टीवी टुडे, न्यूज एक्स पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया है एज ए senior sports journalist. Apart from that, he was a AIF director of communication and chief spokesperson for AIF for so many years. उन्होंने एज ए मीडिया ऑफिसर इंडियन नेशनल टीम के लिए लीड किया है फॉर 550 मैचेस, अराउंड 500 प्लस मैचेस. सो उनका more introduction about him. So he is a ex AIF executive, which will help us to understand more on the AIF side of the story. I'll take few more questions. Specifically आपके लिए हैं.
ओके ओके आज मैच है ओके ये ऑब्वियसली इट्स इमोशनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आपका क्या राय है इसमें थॉट्स See, ऑन the ओडिशा club एफसी has done very well. Club has done exceptionally well. Very good management. Shifted from Delhi. There's no denying that they shifted from Delhi. लोग थोड़ा उसको banter और trend और थोड़ी सी sarcasm के साथ बोलता है. But I see the club management was visionary enough to understand and kind of preempt as कहाँ पे club हमेरा ज्यादा चलेगा. They have settled down well. They are lucky they have been getting the support of a government which has been a pioneer in kind of support for sports, exceptional support coming in, and they have reciprocated all of that in the right manner which they want to do. इंडिया में क्या होता है, जब भी सपोर्ट आता है ना, लोग टाइम बाई कर लेते हैं, वक्त चाहिए. हाँ, बिल्कुल वक्त चाहिए. Each and every professional is accountable. What speaks about Odisha FC is the club has been accountable, the management have been accountable, and the players have been accountable. They know that they need to give back, pay back the government of Odisha and the management in the manner that they are being supported. Cool, calm, good recruitment, and AFC Cup पहुंच गया है. They are out of the group stage with had the favorites Mohun Bagan Super Giants, which is a great achievement for them. Super Cup जीता है. They are coming near to the domestic trophies. Good coach, good set of players, good set of Indian players, though not star Indian players, but players who deliver. Most important with what works out and stands out for me is their commitment toward women's football. I have two yes great friends, Randeep Barua and Avik out there, and their commitment towards women's football in India is exemplary. So good luck to them. A huge fan of the club and the management in management specialty, especially sorry. Good luck to them. Kudos. They are absolutely on the right track. I expect them, जो मैं बोल रहा था, to get into a robust youth development program. Obviously with a look into Odisha and the hinterland, also kind of recruit from the other regions, both men and women, because they have the support of the government of Odisha. Their absolutely government will go all out to support them, and in yes that manner, the pipeline, who knows, maybe from Odisha itself. true and I want to just add one more point के एक कहावत है कि Rome was not built in 1 year but this Odisha FC has been 4-5 years but जिस तरीके से उन्होंने फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर में पकड़ रहे हैं ना इट हैज बीन ट्रेमेंडस सो टाइम लगता है सर ने बोला है बट टाइम पे भी बहुत डिफरेंस है कोई फर्स्ट गियर में चल रहा है कोई न्यूट्रल में चल रहा है कोई सेकंड गियर पे चलता है कोई फिफ्थ गियर में ही अपना एग्रेसिव वे में काम करता है जिस तरीके से उड़ीसा एफसी ने काम किया है और जिस तरीके से गाड़ी चल रही है बहुत बढ़िया है इवन आप क्लब में भी देखिए कि बहुत से क्लब बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर एंड दे वांट टू हैव ए वेरी वेरी स्ट्रांग नो नो व्हाट इन कॉस्टलियर टीम पर उनकी रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं रही है और अभी 4-5 महीने में सर्जियो लोबेरा ने क्या ही रिक्रूट किया है सब फ्री प्लेयर्स हमने रिक्रूट किया है जैसे आपने बोला है कोई नेशनल प्लेयर्स नहीं है एक ही है अमरिंदर पाजी और कोई नेशनल प्लेयर नहीं है बट उनके साथ भी हम अभी टॉप 3 में बैठेंगे और मे बी 2023 हम एंड करेंगे इन टॉप 3 दैट इटसेल्फ सेज हाउ गुड वी हैव बीन डूइंग बट अगेन रोम हैज नॉट बीन बिल्ट इन 1 year absolutely right and it may take 100 years or it may take 10 years it's up to the room to decide one more question because India is 50 years backward in term of football no matter how hard it is you to swallow the pill do you think we are 50 years backward in terms of Asia in terms of the Asia football 10 years तो है. ये मेरी yeah पर्सनल ओपिनियन है. I've seen Asian football more than anyone else in India. From the youth structure to the senior level, we are minimum 10 years. And it's not infrastructure. It's not infra at all. It's yeah pure coaching. Pure coaching at the grassroots level is what is prohibiting us, and recruitment at the grassroots level. Nothing else. Our players are not inferior because जो players हम लोग को मिला है, they have not kind of got the training which they want to, which they should be getting. तो yes players are unlucky. Players के आजकल guidance मिला है how to keep themselves fit, how to prolong their career. But बचपन में बॉल लेना, बॉल देना, बॉल ट्रैप करना, बॉल छोड़ना, पोजीशन लेना, फर्स्ट टच का क्या होनी चाहिए, सेकंड टच क्या होनी चाहिए, बॉल लेके आपको कहां पहुंचने कोई सिखाता ही नहीं है. बहुत
हाथ पे गिने चुने लोग सिखा सकते ऑल ओवर द कंट्री। मैं उसी दिन मेरा प्लेटफॉर्म पे बोल रहा था एक कहानी, जहां पे मैं कोच का नाम नहीं लूंगा, क्वाइट ए फेमस कोच, मेरा कोई फ्रेंड उसका बेटे को फुटबॉल खिलाने के लिए डाई हार्ड मोहन बागान फैन है, भेजा था और मैंने उनका कोच का रेफर किया था क्योंकि उस सिटी में रहता है। और हमें बाद में गाली दे रहे, बोले क्या किसके पास भेजा है? बोले क्लास 2 यानी कि 7 साल की बच्चा का, बोला 800 मीटर चक्कर लगाओ। बोले भाई साहब छोड़ दे, बहुत हो गया। वो बच्चा सीखेगा क्या? वो बच्चा जापान में या कोरिया में, इवन वियतनाम पे या कतार में या चाइना पे, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रेनिंग नहीं होता। तो वो बच्चा तो पीछे चला गया। इट्स लाइक ए guy who has been bred in an English medium school and a guy who has been learning English for the first time when he goes into college. There will be a difference in the pronunciation, his diction, his grammar. Same hai. What time we do we see a real coach is at the age of 14. What time do they see a real coach in Europe at the age of 2 or 3 or 4? What time does a guy in Japan see a real coach at the age of 2, 3, 4? What time did see a coach in UAE? Maybe 6 or 7. तो हम तो 10 साल पीछे रह गए। वो गैप आप कभी नहीं कर सकते unless the coaching at the grassroots increase, means gets better, not increase, gets better. I totally agree because infrastructure you can buy it overnight, but when it comes to human intelligence, नहीं, इंफ्रा हमारे that देश में बहुत अच्छा है उज्जवल भाई। अच्छा है, वो तो बोल रहा हूँ मैं I कि always कर maintain सकते हैं, infra in बेटर कर सकते comparison भी है। to other countries. यस आप यस वी आर। मलेशिया का बुकित जलील ग्राउंड देखिए जहां पे हम लोग खेलने गए थे। ओहो हाँ, हो वो क्या लग रहा था ग्राउंड कि था वो? फार्मिंग लैंड है। या हमारा एब्सोल्युटली देश में एब्सोल्युटली डोमेस्टिक मैच ऐसे ग्राउंड पे नहीं खेला जाता, नहीं होता, एब्सोल्युटली आई इंटरनेशनल एग्री। खेला गया। एंड बुकित ट्रू, जलील इज अ लवली स्टेडियम, आई हैव लवली या मेमोरीज ऑफ द स्टेडियम पर्सनली। ट्रू, बट हुआ ट्रू, क्या? सो नो, किस हिसाब से हम इंफ्रा को आज आईएसएल मैचेस खेलता है कौन सी ग्राउंड पे? दे आर वर्ल्ड कप स्टेडियम्स। किस यस इंफ्रा यस के बारे में लोग बात कर रहे हैं? यस या द टीम ट्रेंड इन ओडिशा, जहां पे आपकी इंफ्रा इतना ब्रिलियंट है। Infra only comes as an excuse for certain individuals who want to hide their incapabilities and failure और इंफ्रा पे नाम पे दे देते। इंफ्रा नहीं है, इंफ्रा बहुत है, आपकी कैपेबिलिटी कम है भाई साहब। एब्सोल्युटली एंड ये इंफ्रा आप मेरी मेरी ओवरनाइट ओपिनियन है। नहीं नहीं वो सही बात है, इंफ्रा को आप ओवरनाइट बढ़ा भी सकते हो, बेटर भी बना सकते हो, स्टेडियम 2 साल सो में आप बना सकते हो। द पॉइंट हियर इज दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसे है, वो आपको ओवरनाइट नहीं मिलने वाला, आप खरीद के नहीं आ सकते। यू हैव टू डेवलप सेवरल डिकेड टू ब्रिंग टू दैट लेवल। और ये आप जॉब पे भी देखते हैं, मैं जब अभी नो एज ए मैनेजर आई एम वर्किंग, सो मुझे जब टैलेंट मिलते थे यू नो फ्यू इयर्स बैक, वो अलग ही लेवल के टैलेंट थे, अब एक अलग लेवल के टैलेंट मिल रहे हैं। सो टैलेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बस इंफ्रा मतलब मेरे पास बहुत सॉफ्टवेयर है, बहुत से यू नो पाइथन है, ये है वो है, तो मैं क्या सब कुछ उखाड़ लूंगा? नहीं उखाड़ नहीं सकता। टिल टाइम तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए वो मेरे पास ही नहीं है। तो वो पॉइंट तो यहाँ पे है जो कि आर्सेन वेंगर ने ये पॉइंट आउट किया कि आई एग्री के यू नो इंडिया हैज दैट यू नो इंफ्रा एंड एवरीथिंग, बट फॉर एग्जांपल एन इंडियन किड इन इंग्लैंड एंड सेम इंडियन किड इन इंडिया, डू यू थिंक आफ्टर 10 years, 2 years में सेम रहेगा, 1 साल में भी सेम रहेगा, 4 years में भी सेम रहेगा, बट आफ्टर 10 years इंडिया में जो किड है इंडिया में, वो कितना फुटबॉल में डेवलप करेगा, और वही इंडियन बंदा इफ इंग्लैंड में रहेगा वो 10 years में कितना नो फुटबॉल में ग्रो करेगा? आपको पता है कि इंग्लैंड में जो वही इंडियन बंदा, वही मसल्स जो बोलते हैं रेड मसल्स नहीं है, वही इंडियन में था, वहीं पे वो 10 years में एक अलग लेवल का प्लेयर बन सकता है और ग्रो कर सकता है, जबकि वही 10 years में वो बंदा उतना नहीं हो पाएगा इंडिया में। इज नॉट बिकॉज कि वो बंदा खराब है, बंदा वही है, बट उसको ट्रेन करने वाला बंदा जो नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वो एनवायरमेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग सिस्टम प्रोसेस नहीं है, जहां पे हम लैग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप इन अ ड्रीम और इज कैन बी अ रियलिटी? और हमारे जन्म में तो हो पाएगा या नेक्स्ट 2-3 जन्म के बाद होगा, क्या है? देखिए, इफ यू आस्क मी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैं ये सच्ची बोल रहा हूं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। ये 10 साल का कोई प्रोग्राम हम लोग चला ले, हाँ, जो विजन 2017 से हम लोग लिए थे, हाँ, द गाइज डिड नॉट मैच्योर, मे बी नहीं हो पाया। लेकिन आप 14 से 16 से 17 से एक्सपोजर देके यदि बच्चे लोगों को आप बड़ा कर लो, उस हिसाब से आपका इट्स वेरी मच पॉसिबल। एंड स्पेशली sneaking into the World Cup and performing at the World Cup are two entirely different things. आज के दिन पे the number of teams from Asia have increased, जिसके लिए लोग players of their foreign origin players को लोग ला रहे हैं, क्योंकि आप एक दिन पे overnight you cannot make a jump into the
what do you say, into the same quality as other World Cup teams. तो उस नंबर ऑफ टीम्स में आपको देखनी है आप कहां पे हो. आप रियलिस्टिकली देखिए हमको कि हम कितने टीम को हरा सकते हैं. आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना नहीं है वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए, जापान को हराना नहीं है, आपको यूएई को हराना है. आप यूएई के हरा सकते हो 10 साल में. यदि यूएई को 10 साल में नहीं हरा सकते तो क्या हम किस लिए हम खेल रहे हैं. एंड अप्लाइज टू एवरीवन, to me, you, the federation, the players, the clubs, the fans, everyone. We do not need to qualifying to the World Cup. You do not need to beat a Korea or a Japan. You need to be a UAE or an Uzbekistan. Then you can qualify. Now, how will you perform at the World Cup is a different entity. लोग ये दोनों को ना मिक्स कर लेते हैं. क्वालिफाई करना आसान है, परफॉर्म करना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. बट once you qualify, then only the entire scenario of the country's sporting paradigm changes. So if in 10 years Uzbekistan, Oman, Vietnam, China, Tajikistan, Kyrgyzstan, if we can't beat, against whom we have done well in the recent past, these are our competitors. Korea, Japan, Australia, Iran, they will automatically qualify to the World Cup. वो तो आंख बंद करके जाएगा, आप उनसे कुछ नहीं कर सकते. बाकी टीम्स कौन है? वही पैलेस्टाइन है, जॉर्डन है, यूएई है, ओमान है, वियतनाम है. तो इनके साथ हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहा है? इट्स बीन अप एंड डाउन, बट दे वर बेटर, बट दे वर बीटेबल. 10 साल में वो भी इंप्रूव करेगा, यहां से यहां जाएगा. क्या हम यहां से यहां जा सकता है? इट्स इजियर एंड इट नीड्स टू बी डन एट द यूथ लेवल, क्योंकि हमारी कोचेस यूथ लेवल पे बहुत कम है. ढंग की कोचेस को आप सीनियर पे मत ले जाओ. प्रो लाइसेंस जो कोचेस आपकी बैच बैठे उसको आप यूथ पे लेके आओ, पैसा देके लेके आओ. मुफ्त में कोई काम करने वाला नहीं है. उनसे आप डिलीवरेबल्स मांगो. यूथ कोचेस से बोलिए मुझे ये प्लेयर्स को उस जगह पे पहुंचानी है. ओनली देन यू गेट प्लेयर्स. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कोच एंड द सपोर्ट स्टाफ needs to be the most prominent factor in the development of any sporting sector. Otherwise वही विजन हम लोग को सेल किया जाएगा. True. But what about Triman Ranveer? He came to India, get Indian citizenship, but due to complex rules and everything, he returned back to Belgium. But उसके आंसर उन्होंने दे चुके हैं कि कोई इंडियन टीम भी, मतलब इंडियन क्लब्स कोई ऑफर भी नहीं किया उनको, contract. That has been one thing which also triggered that he back to Belgium. But again, I'd like to hear from UK. और कुछ पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं on the Melbourne point? नथिंग. ये तो सेम चीजें हम बार बार बोलते हैं. देखिए, हम पसंद करें ना करें, वेरी शॉर्टली द लॉ ऑफ द लैंड वही है कि आपको इतना टाइम बिताना पड़ेगा. जो आप कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो विद इन कोट्स, मे बी इट्स कॉम्प्लेक्स, बट वही रूल है. हम किसी एक्स प्लेयर के लिए लियोनेल मेसी भी आ जाएगा तो कल चेंज नहीं होगा. थैंक्स नजरुल भाई. आपके लिए क्वेश्चन है दादा, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 फ्रेंडलीज कब होगा? गणेश नायक का क्वेश्चन है. You are asking the wrong person. ये तो people, my friends in the IFA would be able to answer that. Absolutely no idea. देखिए, 23 का फ्रेंडलीज ना उतना रेगुलरली नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी जहां पे मैचेस होता है, हाँ, ये मैचेस जब होता है आपकी 23 का टीम्स मेनली मोस्टली प्रायर टू टूर्नामेंट्स खेलते हैं. तो रेगुलर फ्रेंडली फॉर 23, 19, 16 इज नॉट पॉसिबल. निरंजन सर, आपको क्वेश्चन है कि व्हाई AFA इज नाउ बिजी इन डूइंग द पीआर वर्क? डू यू थिंक दे आर डूइंग द पीआर वर्क और दे आर रियली वर्किंग ऑन? देखिए, नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि पीआर वर्क है. अगेन, लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट प्रोसेस रहता है. whatever is being done needs to be taken out to the fans. because fans लोग बोले थे कि पहले बोलते थे, कंप्लेन था कि हम लोग के तरफ से खबर उतना नहीं मिलता है कि ठीक है जी क्या हो रहा है, जबकि पूरी ट्रांसपेरेंसी था. तो उसके हिसाब से आपका जो काम किया जा रहा है उनको बोल रहे यू कैन लेबल इट एज ए पीआर वर्क, यू कैन लेबल इट एज ए गुड इनिशिएटिव. इट डिपेंड्स, बट आई डोंट थिंक सो इट्स जस्ट पीआर वर्क. पीआर इज समथिंग व्हिच इज selling a product or selling a narration. I don't think so that's being done. This is my personal opinion. Absolutely. Would like to hear more about Kalyan Joveji. He has been, been here in 2 years. How would you, see him, and what are the things he can look out next? There have been some good initiatives which has been taken over by since not 2 years. Kalyan आया था last
September, 3rd or 1st of September 2022. It's been 1.5 year, maybe, or 1 year, 4 or 5 months. Kalyan aaya tha. Some good initiatives. The recent one has been that of the FIFA Academy. Though academies hum log ko pehle tha, but there's no harm getting the academies back. That's a good initiative. यदि कोचेस प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एकेडमीज कल्याण चौबे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया है फीफा के साथ, मींस आपका गुडविल, गुड रिलेशनशिप इस्तेमाल करके आर्सेन वेंगर हैज कम. नाउ मिस्टर वेंगर्स टीम हैज नॉट फाउंड द कैडेट्स टू बी ऑफ गुड क्वालिटी. इट्स नॉट कल्याण चौबे's फॉल्ट. तो लोग कल्याण को व्हाट डू यू से ब्लेम कर देगा. पहले भी ब्लेम करते थे प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट ने भाई साहब टैलेंट स्काउट नहीं किया है, प्रेसिडेंट ने किए थे, लोगों को दिए थे who have let the people down. If the president has employed you or Ujjal bhai or myself and we are not able to kind of work in the accountable manner he expected us to do, we are letting him down. Yes. He takes the blame, but who's letting him down? It's we. Yes. If the team, whatever the team performs in the Asian Cup, people may blame him, but उसने सब कुछ किया, उसने और क्या कर सकता है. आपको सब कुछ दिया है. हाँ, तो उस हिसाब से so he's done some good initiatives. The academies have been good. The Mardeka Championship was good. Taking it to Manipur was very good. Obviously, after COVID, some leagues were shut down. The youth leagues have come back. So he has been doing trying his best and doing some good initiative. There's no doubt on that. Okay, ये थोड़ा controversial situation चल रहा है आजकल. How do you see? I know you might have little information. I have very little information. But what is your take on the Super Cup with the limited information we are having? देखिए, ऑनेस्टली बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है मेरे पास. हाँ, क्लब्स ने क्या बोला है इसके बारे में भी पता नहीं. वॉट एवर द सिचुएशन ऑफ द सिनेरियो इज, ये भी मुझे पता नहीं. हाँ, बट देखिए, there are two sides to this coin. One is the exceptional government support coming in from the government of Odisha. इसमें कोई doubt नहीं है. But hosting a tournament, I understand जब clubs complain कर रहे हैं, I'm reading in the newspapers and the digital platform and the social media platforms also getting to hear quotes from certain coaches. एक कोई भी इतने सारे टीम्स एक वेन्यू में आने के लिए, you need to have more practice grounds and obviously much more, many more hotels. तो होटल्स तो उड़ीसा गवर्नमेंट का, किसी का उड़ीसा को ब्लेम करने का, जो होटल्स है तो है. और जो आपकी इतने सारे ग्राउंड्स का जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज है, मे बी द नंबर ऑफ ग्राउंड्स व्हाट दे आर हिंटिंग एट, आई एम नॉट अवेयर, आर नॉट सफिशिएंट, बट मींस it's all over the country likewise. And there are certain also what do you say pros and cons of each and every venue in the country. तो ये complaints from teams will always be there. Efforts from the organizers will always be there. It's not that you move on to a different venue, you'll be getting each and every thing which a team asks for. There would be obstacles in many of the fields. The game also needs to spread. So, but I'm not aware of what this situation exactly is. So, taking a side or commenting, जो हमें on the bird's eye view में लग रहा है, that's it, what I said. एंड वन मोर थिंग, इवन वर्ल्ड कप जो रिसेंटली हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे भी बहुत से क्वेश्चन आए थे और बहुत से डिबेट हुई थी कि ये ठीक से हो नहीं रहा है, यहाँ पे स्टेडियम को बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक वे में लोगों को फोर्सफुली करवा जा रहा है. सो हर चीज में ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड रहता है. जब वर्ल्ड कप, इतना बड़ा वर्ल्ड कप उन्होंने सक्सेसफुल वर्ल्ड कप करवाया, फिर भी उनके नाम पे बहुत पॉइंट उठी थी, और उसमें सच्चाई भी होगी, कुछ सच्चाई भी नहीं होगी. सो we can't deny the fact. Always it is not always your perfect. देखिए, हम लोग के देश में ना नेगेटिविटी it sells to such an extent, sometimes it gets to your head and it's very discouraging. आज आप, as we speak, the test match India versus South Africa, कभी कभार लग रहा है कि अंडर प्रिपेयर्ड पिच पे खेला जा रहा है. इंडिया में जर्नलिस्ट और बाकी मीडिया या कोई लोग कुछ बात नहीं करेगा. Had this happened in India, the entire world including our media उस पे जंप करके आ जाता, अरे ये तो अंडर प्रिपेयर्ड पिच किया है, टर्निंग ट्रैक किया है, बॉल नीचे जा रहे हैं, बट वहां पे हो रहे हैं तो पीपल, इट्स ओके, हाँ, इट्स वी नीड टू अडैप्ट टू सर्टेन कंडीशन. दिस नेगेटिविटी हैज ऑलवेज बीन देयर. आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट द क्लब्स आर सेइंग आर रॉन्ग, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट दिस नेगेटिविटी व्हेन इट्स मेंशन्ड अबाउट द वर्ल्ड कप, दैट्स ऑलवेज बीन देयर. पीपल kind of hunt for, I have been a journalist myself and my grooming was that bad news sells. If you want to make a name for yourself, do the bad news. Good stories to hona hi hona hai. And if you look at the media around, be it from the
scenario, of the political scenario, or the films, or the economics, business side, sports, definitely it's the negative news which grabs more eyeballs. Excellent. I agree with you. And one more thing, जो भी हमारे almost 60 to 70 Indian fans are watching, please don't forget to like the stream यार. सपोर्ट करो और 100 लोगों के पास जाएगा जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, उनका भी फायदा होगा, इंडियन फुटबॉल का फायदा होगा, एट द एंड हमारा भी फायदा होगा कि आप लोगों को कुछ हम आज इन्फॉर्मेशन दे पाए. सो दैट इज बी रियली ग्रेट. एंड अगेन एट द सेम टाइम आप प्लीज बोल दादा बोल की जो चैनल है, जो कि मैंने पिन कमेंट में पिन किया है, कमेंट पे जाइए, पिन कमेंट होगा, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, उनकी वीडियोस चेकआउट कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल not return before subscribing Bol Dada Bol. Almost near to the 1000 subscription. One more question, no, not a question, I just wanted to tell you everyone कि 5 star hotel की जो बात recently, I can take the name, Ivan and Manolo ने जो बात किया है, I just wanted to tell you few 5 star hotel जो कि उड़ीसा से हूँ तो मुझे पता है, जैसे मेफेयर है, एम्पायर है, ताज विवांता है, लेमन ट्री प्रीमियम है, सैंडी टावर्स है, जिंजर है, ट्रिनिडेंट होटल भी है, एंड देयर आर lot of big hotels, big 5 star hotels are there. So I don't know on what basis they told हॉकी वर्ल्ड कप आपने हमें रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया, वी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवाया जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं था कि कलिंगा स्टेडियम में होगा, और हमने करके दिखाया और बहुत ही सक्सेसफुली कर दिया है. और बहुत से बाकी के आईएसएल मैचेस जहां पे हो नहीं पाते हैं, वहां हम कलिंगा में करवा रहे हैं, कोई दिक्कत के बिना, कोई कंप्लेन के बिना. सो वी आर डूइंग आवर जॉब वेल. यस, एज आई सेड, हर चीज में एक आती है, और एक माइंड गेम तो होगा ही मानोलो ने इवान के लिए, बिकॉज सर्जियो लोवेरा इज ऑन अ मिशन. There will be a mind game playing, and we'll ready for the super cup. Moving on to the question, थोड़ा banter तो बनना चाहिए ना सर. Football and Okay, sports is all about banter as long as it doesn't get personal. absolutely. And again मैं यही बात हर इंडियन फैंस को बोलता हूँ, हमारे क्लब के फैंस को बोलता हूँ कि भाई सपोर्ट करो, बैंटर करो, बढ़िया से बैंटर करो, ऐसे ऐसे टेक्निकली वे में बैंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है. डोंट क्रॉस द लिमिट, द टॉक्सिसिटी एंड द नेगेटिविटी, abusing player, never ever do that. This I learned from my whole journey of an as a football fan. Sir ने भी यही बात बोला है, तो मैं just wanted to tell you, keep on telling every matches जब होती है, हम जीतते हैं या हारते हैं, आप लोग जो गुस्सा होते हो, I know you are emotional, या मैं भी इमोशनल हूँ, होती है, इसका मतलब नहीं कि हम एक लेवल क्रॉस करेंगे. एट द एंड दे आर द प्रोफेशनल्स ऑल्सो. ठीक है. ये क्वेश्चन आया है अभी वर्मन जी से कि एआईएफएफ डजंट ऑर्गेनिक एनी प्रॉपर यूथ लीग. Sorry, the light from Bol Dada Bol has happened. हाँ जी, बताइए. AIFF Sorry. doesn't organic and proper youth league. नहीं, ऐसे नहीं, यूथ लीग्स है, बट देखिए सिर्फ एआईएफएफ के तरफ से नहीं हो सकता. इट नीड्स टू बी डन बाय द स्टेट एसोसिएशंस एंड द डिस्ट्रिक्ट्स. ये हम लोग गलती करते रहते. द यूथ लीग्स टेक इन टू प्लेस 16-19 लेवल पे लीग्स होता रहता है. ऑब्वियसली दे आर एट अ मच हायर लेवल. आपका ऑल ओवर द कंट्री यदि इतने बड़ी देश में है, एक होलिस्टिक अप्रोच नीड्स टू बी अप्रोच्ड बाय needs to be embraced by each and everyone. How many of the state associations run their youth leagues? How many? आप काउंट करिए. मैं पता नहीं, जो भाई साहब ने पूछे आपकी स्टेट में शायद हो सकता है, आपका देन बगल वाला स्टेट में देखिए, उनकी बगल वाला स्टेट में देखिए कितने होता है. तो आप खुद नहीं, आप नहीं, हाँ, जो भाई साहब पूछे है, या वो एफसी गोवा माय के फैन है, सिस्टर, तो गोवा से हाँ है. हाँ, तो आपकी गोवा का सिचुएशन इज डिफरेंट, द अदर स्टेट्स आर डिफरेंट. ऑल थ्रू आउट द ईयर द यूथ लीग्स नीड टू बी रन. Only then will people be coming and the kids would be coming in to play the leagues. Only then आपका youth league success हो सकता है. टॉप हेवी अप्रोच पे youth leagues नहीं हो सकता. And the financial sustainability of a state association depends on the state associations themselves. आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीसीसीआई पैसा देता है तो एआईएफएफ को भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई कितनी वर्ल्ड कप जीत के आया है क्रिकेट टीम. भारतीय टीम सैफी जीता है, इंटरकॉन्टिनेंटल और ट्राई नेशन ही जीते. इसके आगे हम लोग कुछ नहीं जीते, और उसका जो प्राइज मनी होता है वो मिनिस्क्यूल होता है, प्लेयर्स को दिया जाता है. सो टू गैल्वनाइज द एंटायर सिस्टम ऑफ द कंट्री, उस लेवल पे सक्सेस फुटबॉल पे आया नहीं. और फुटबॉल पे इसीलिए नहीं आया है क्योंकि यूथ लीग्स ऑल ओवर द कंट्री लोग खेलते नहीं है. लोग क्रिकेट खेल लेंगे क्योंकि फुटबॉल खेलने का जगह ही नहीं है. आप पूछो हमें दिल्ली में कि कितने जगह पे आपको कोचिंग फुटबॉल ढंग से किया जाता है. जहां पे किया जाएगा, सपोज
एक अदर पार्ट, इट्स ए ह्यूज सिटी दिल्ली, 50 किलोमीटर ट्रैवल करके कोई आएगा? देयर आर सम कोचेस जो ठीक ठाक ट्रेनिंग करवा रहे हैं, नहीं करेगा क्योंकि लीग्स नहीं होता, बच्चे नहीं खेलते, आपका एकेडमीज भी नहीं डेवलप हो रहे. सो द प्रॉब्लम टू मी स्टेज आउट देयर. ओके, इंडिया सीएएफए में ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ? एनी अपडेट ऑन इट? के काफा के जाने के बाद हम सैप छोड़ रहे हैं या काफा में हम रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे? कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए, ये तो दिस नीड्स टू बी अ डिसीजन एज फार एज माय नॉलेज गोज फ्रॉम द एएफसी. यू कैन नॉट जस्ट ऑल ऑफ अ सडन से कि भाई साहब मैं तो सैफ रीजन छोड़ के मैं उधर चला गया. हाँ, ऐसे नहीं हो सकता. यू आर एफिलिएटेड टू द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन. हाँ, यूजिंग योर गुडविल you can get an invitation from that region, from any other region, to be playing in their regional tournaments. That's absolutely fine. Why not? But changing from the SAF region is a process, and because of the geographical location and the proximity that India is at the current moment, us hisab se, what do you say? It looks a bit. Um, I won't say dicey, but it's not that possible. Rightly कि आज बोले और हम चुटका मार के एक रीजन से दूसरी रीजन पे चला गया. एब्सोल्युटली, आई एग्री. सर, आईएसएल टीम की जो बी टीम है, मतलब बी टीम है, उन लोग आई लीग में क्यों नहीं खेलते? और ये क्यों नहीं है? और ये क्यों नहीं किया जाता है? उसको एनकरेज क्यों नहीं किया जाता है कि रिजर्व टीम वहां पे जाके खेलेंगे? जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग में आपने देखा है कि ऐसा कुछ करते हैं, यूथ टूर्नामेंट करते हैं, बहुत से कुछ एनकरेजमेंट करते हैं. इवन ला लीगा में भी आप रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना की जो यूथ टीम है वो रेगुलरली उनके लीग में खेलते हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया से होता है. और वो भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना है, मतलब अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं है. आई लीग इज लाइक लीग इज रेडी, बस आप टीम आप यूज करके उसको बेटर बना सकते हैं. आपको क्या लग रहा है कि ये इंडिया टीम है, इंडिया में एडॉप्ट करना चाहिए, और देयर इज ए अदर प्रॉब्लम्स आर देयर? Yeah, I mean, if you ask, it's a very valid point. Very valid point. Someone who's asked Mr. Sahil Rana. Very valid point to me. I League पे क्यों आप I League को ना छोड़ के let the reserve teams of the ISL clubs play. मैच होने से पहले आपका 8 बजे किक ऑफ है, आप 5 बजे उन लोग का एक मैच करवाइए, 4 बजे एक मैच करवाइए. हाँ, there will be the climatic conditions will be different, but at least they are getting to play. और मे बी ए डे प्रायर आप वहां पे कुछ एक मैचेस करवाइए. हाँ, सो दैट इट्स ऑल्सो ए प्रैक्टिस मैच फॉर प्लेयर्स हु आर ऑन रिहैब, हु आर ऑन द फ्रिंज. मोहन बगान की रिजर्व टीम प्लेइंग अगेंस्ट द केरला ब्लास्टर्स रिजर्व टीम. हाँ, व्हाई नॉट? दैट कैन इजीली बी डन. आई लीग में कितने टीम्स खेलना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, एंड मोर और लेस आपकी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, देन ऑल्सो यू ऑल्सो गेट टू टेस्ट देम. बिकॉज हाँ, हम ये more or less take it for granted that the level of the ISL is a notch higher than the I League. So let it be an Indian player, first Indian 11 versus first Indian 11. If there are rehab players from the foreign players into that reserve team in under rehab, they can also come and play for match practice. I'd rather go with a match against the ISL clubs than the I League. That can obviously be implemented. It's been in talks, but hasn't happened so far. To me, it's spot on. It's spot on. That's how it should have to happen. Absolutely. It allows game time for everyone. Because जो प्लेयर बैठे हैं, आपको खेल नहीं रहा है रेगुलरली, जिसको सिर्फ 10 मिनट मिलता है, आप उनको खिलाइए ना. रेगुलर खिलाइए. देयर आर सम प्लेयर्स जिसको आप लेके बैठे हो, जिसको कभी खिलाते नहीं हो, आप खिलाइए उनको. पॉलिश तो करिए, नहीं तो जंग लग जाएगा. Absolutely, and even I'll take an example of Tangri, and take an example Asik. Asik की जैसे अभी prolonged injury से आते हैं, तो अभी सडनली वो मोहन बागान टीम में उनको चांस मिला, बहुत मुश्किल है, और वो भी बहुत खतरनाक भी होगा उनके लिए कि और एक टैकल हो जाएगा एंड ही विल बी गॉन फॉर अनदर 12 month. So it's better to go and hit the ground in I League and spend some time or 2-3 match, get a match fitness and come back and प्ले. दिस ऑलवेज इवन क्रिकेट में भी होता है और यहाँ पे भी होना चाहिए. और तांगरी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मोहन बागान में उनको बहुत टाइम वेट करना पड़ा बिकॉज वो इंजरी से आ रहे थे, तो उनको चांस नहीं मिला था. बट वो इफ आई लीग में चांस होता तो वो लोग आई लीग में जाके खेलते, वहां पे अपना एक्सपीरियंस लेते और परफॉर्म करते. फिर कोच बोलता अरे भाई ये तो बंदा बढ़िया खेल रहा है यार, इसको टीम में लाओ. सो इट ऑलवेज वर्क इन दैट वे. ओके. And if I may just interrupt and mention, if I was more part of the any management, we would have rather also put offered some players on loan to I League clubs, players who you are sure shot won't be playing. मैक्सिमम पूरी सीजन में शायद 1 घंटा भी नहीं खेलेगा. आप उनको आई लीग में खिलाइए ना, जो बच्चे प्लेयर्स हैं, अंडर 19, अंडर 20, 21, एटलीस्ट बैठा तो नहीं रहेगा. हाँ, you are paying him maybe 20 lakhs a year.
20 लाख में से आपको 7 लाख ही आ जाए आई लीग टीम से, कम प्राइस में दे दो, लेट हिम प्ले, at least you save some cost, and more importantly than those 7 lakhs or 13 lakhs which you are saving, the player needs to play, the player gets game time. And ऐसे नहीं है कि आई लीग की मैचेस खराब बहुत घटिया लेवल पे हो रहे, some of the I League matches which are happening are at a very good level, at a very good high intensity, and let's not forget वहां से भी हम लोग का टीम्स आ रहे हैं इसी कप में, there are chances. So that option also needs to be looked into by all the clubs. I'm surprised clubs and recruiters and the management do not look at that option with open hands. Absolutely. आई लीग 3 के पिचेस इतने खराब क्यों हैं? मतलब आई हैव आल्सो सीन कि उतने अच्छे नहीं जितना हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये क्या दिक्कत हो रही है? मतलब ये फंडिंग की इश्यूज हो रही है या जो क्लब्स हैं उनको उतना पैसा नहीं है कि वो दे कैन हैव दोस गुड पिचेस? हाउ डू यू सी? देखिए दे आर ऑब्वियसली फंड्स ग्रेट, की, वो ऑब्वियसली आईएसएल लेवल का नहीं होगा, वो तो हमको एक्सपेक्टेड है, बट व्हाट इज योर ओपिनियन? obviously funds की issue I understand होना है, and also a bit of vision and ambition, because आपको पिच बनाने में लोग सोचेगा ये सुन के कि अरे ये तो बोल रहे हैं भाई साहब, बैठ के बोलना बहुत आसान है, बट एक पिच बनाने में ज्यादा प्राइस नहीं होता है। आईएसएल पिच बनाने में जो एग्जॉर्बिटेंट रेट लगता है, पिच इन कल्याणी और दी पिच इन मणिपुर जो बनाए थे मेरा एक दोस्त ने, एट पीनट्स। आप कल्याणी का ग्राउंड देख लीजिए जो कि मेरा होम टाउन है, वेरी प्राउडली आई मेंशन, उस ग्राउंड इतनी सालों से कोई रिफर्बिशमेंट नहीं हुआ, इतनी सालों से। कल्याणी का ग्राउंड ऑलमोस्ट 2003-4 से बनाया गया है। हाँ, 20 साल से वो ग्राउंड टिक गई है, बिकॉज प्रॉपर मेंटेन्ड होता है, और मेंटेनेंस खर्चा पीनट्स है। ए फ्रेंड ऑफ माइन डज इट, आई नो इट। हाँ, लोगों को एक लगता है और एक बिजनेस बन गया कि ग्राउंड बनाना तो इतनी पैसा खर्च करनी है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। एवरी ग्राउंड अपना ओन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बनते। आज के मणिपुर का ग्राउंड भी जिस कंडीशन पे बना देते, राजस्थान का ग्राउंड भी उस कंडीशन में बना देते, चेन्नई का ग्राउंड भी उस कंडीशन से बना देते। द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट, वेयर एंड टियर होता है, मेंटेनेंस के लिए यू स्पेंड मोर। सो एब्सोल्युटली। I understand there can be issues, but that much of money, obviously, I gauge can be spent and should be spent, and it does not cost much at all. Grounds are done at a very, very nominal peanut cost. हाँ, कुछ पैसा आपको देना पड़ता है. Depends on what the condition. आपकी पूरी फेंकना पड़ेगा मिट्टी, नहीं फेंकना पड़ेगा. So there are many people who are helping out guys. So Absolutely. Punjab FC, emotional moment है Punjab FC to get promoted and be part of ISL. What is your take on the like what Punjab has been from last 2 season? They came in with big plans, big plans, has been there for quite long. When people are dismissed them और बोल रहे थे कि इतना पैसा खर्च कर रहे ये टीम नहीं चलेगा, they had big plans, they had vision to build an academy at a very elite stage, but अभी भी रास्ता थोड़ी सी बाकी है. So whoever comes into the ISL, it will be a very, very emotional moment for them. Good luck to all of the clubs. But the competition is on, and it would be a bit premature maybe to be gauging. But yeah, I can only speak about the vision of the club from Punjab FC, and let's see. You are saying you're right in saying about the infrastructure, but it's only for top club teams in India. But sir, it is not for the all small clubs or grassroots. Please, sir, I have to think to send my son to play for a small club. बिल्कुल कैसे? सही, बिल्कुल सही, Mr. Casimiro Fernandez, absolutely right. And therein stays the responsibility of the district associations and the state associations. Absolutely. हाँ, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, नाम देके बोल रहा हूँ. I was brought up in a town called Chinsura, which was a Dutch settlement in West Bengal. वहां पे the district sports secretary is Mr. Tanumay Bose, former India goalkeeper, ex Mohanbagan East Bengal goalkeeper, a childhood hero of mine. चिंसुरा एक ऐसी जगह है, जो लोग चुंचुरा देखे हैं, एक सड़क बीच में, which is hardly 5 meters 6 meters का एक रोड है, एक ग्राउंड, एक रोड और एक ग्राउंड, एक रोड, 2 ग्राउंड, यानी 4 ग्राउंड है. तनुमादा आने के बाद he has changed the entire scenario of that grounds to a much better level of what it used to be. उसने क्या किए जानते हैं? उसने 2 ग्राउंड पे सर्कस लगा दी, पैसा लिया सर्कस से, हाँ, ऑफ सीजन में,
एंड देन उस पैसे से ग्राउंड को रिफर्बिश कर दिया। यू नीड टू थिंक ए बिट आउट ऑफ द बॉक्स। आपको बैठे रहो सर जी मुझे पैसा तो कोई नहीं देने वाला, फन नहीं है। ट्रू। उसने मेला लगवा दी। लोग बोले क्यों मेला लगवाए, मैं भी बोला दादा तुम मेला लगवा रहे हो, बोले भाई इसके पैसे में तो ग्राउंड बनाऊंगा, और बना दी उसने। एंड द ग्राउंड्स आर नॉट वर्ल्ड क्लास, बट जो कश्मीरा फर्नांडिस बोल रहे हैं दैट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस ए ग्राउंड much better than it what used to be, sufficient to play club level football at the senior level and allow the kids to train and play. That's what each and every state and district association needs to do. A club, ISL club or an I League club or big club, it's not responsibility. I belong from Bengal, so the two clubs who are playing there, Mohun Super Giant, East Bengal and Mohammedan Sporting also from the I League, उनकी responsibility नहीं है पूरी स्टेट का संभालने के लिए, ओडिशा एफसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पूरी ओडिशा संभालने के लिए, भाई लोकल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लोग क्या कहते हैं, अरे पैसा नहीं दे रहे भाई साहब तो जगह छोड़ दो दूसरे के लिए, मूव अहेड, इट्स सिंपल एज दैट। सो दैट थिंग नीड्स टू बी टेकन केयर बाय द डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, दैट्स माय ओपिनियन। एब्सोल्युटली। साजी प्रभाकर ने एआईएफ पर केस कर दिया, फीफा कोई एक्शन लेगा इसके ऊपर? वी आर नॉट गोइंग टू गो इन द Saji Prabhakar versus Kalyan Dubey, but let's not get into this. It's a matter which is sub judice and let's wait for it. लेट्स वेट। ओके, क्या हम आईएसएल टीम के भी आई लीग वो तो हमने ले लिया है, इंडिया शुड क्विट। ओके, इंडिया शुड कम्पीट विद वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान एंड चाइना फर्स्ट, जो कि सर ने अभी इस ओपिनियन इस पॉइंट पे बात कर लिया कि भाई हमें इनसे फाइट करना है, इनसे आगे जाना है, बिकॉज दे आर द राइट टारगेट, डायरेक्ट कंप्यूटर राइट नाउ। भाई दे एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है कि इंडिया एफसी कप खेलने वाला है एंड हमारी कैंप भी स्टार्ट होने वाली है, कोई फ्रेंडली मैचेस नहीं है, जबकि बाकी कंपटीटर्स जो हैं हमारे ग्रुप में, मैं बाकी की बात नहीं करूंगा, हमारे ग्रुप के बारे में बात करूंगा, वो लोग फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं। एज ए टीम मैनेजर फॉर सो मेनी मैचेस इन इंडिया, फॉर इंडिया, आपको क्या लग रहा है कि फ्रेंडली हेल्प करता है फॉर द प्रिपरेशन फॉर सच ए बिग टूर्नामेंट, और हम लोग शांति से रहेंगे क्योंकि बहुत से हमने आईएसएल के बैक टू बैक मैचेस खेले हैं, सो वी वांट टू टेक अ ब्रेक एंड कंसिडर ऑन द प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग एंड देन गो ऑन टू फेस द ऑस्ट्रेलिया। आप तो टीम मैनेजर है, आपका क्या राय है इसमें? नहीं, मैं मीडिया मैनेजर था, टीम मैनेजर नहीं था। सॉरी आई वाज a kind of default team manager for certain matches and certain tournaments, but never designated as a team manager. Team manager is an administrative post in any case. देखिए, this is इस क्वेश्चन की जवाब आप किस नजरिया से इसको देखना चाहते हो, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? देयर आर अगेन टू साइड्स ऑफ दिस कॉइन। देयर इज वन पर्सपेक्टिव व्हिच सेज दैट आई नीड प्रैक्टिस मैचेस टू गेज वेयर वी स्टैंड। द सेकंड पर्सपेक्टिव सेज दैट ओके द प्लेयर्स आर कमिंग आउट ऑफ ए लीग, you need to be giving them the right, keep them in the right frame of mind, not expose them physically much more so that they pick up any injury, and kind of prepare them for the stiffer challenge ahead, which are the matches in the AFC Asian Cup. Now, ये पर्सपेक्टिव हम लोग को एक एक टूर्नामेंट पे एक एक टाइप पे बताया जाता है। कभी बताया जाता है जब टीम्स डायरेक्टली ऑफ सीजन पे आता है, क्लब्स तो खेले ही नहीं है, बच्चे खेले ही नहीं है, कैसे खेलेंगे, दे आर कमिंग आउट टोटल 2 महीने प्लेयर नहीं खेला है, वो दे आर नॉट इनटू कॉम्पिटिटिव फुटबॉल एट ऑल, जो सही है। जब कॉम्पिटिटिव फुटबॉल से आता है तब हम लोग को समझा दिया जाता है, अरे यहाँ पे तो क्या बोले, कौन समझा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, कि अरे प्रैक्टिस मैचेस नहीं है। बट ऑल ऑफ दिस आई कैन गारंटी, all of this was decided in a discussion by all stakeholders. People may go back, people may say no, all of this was discussed and decided by a meeting across among all stakeholders. log mane या ना माने, that's the procedure. ऐसा नहीं है कि उठा के कि घर का एकदम नाना जी बोल दिए भाई ये लाइट नीला होनी चाहिए, पीला नहीं होएगा तो पीला नीला ही होएगा, पीला नहीं, ऐसे नहीं चलता भारतीय फुटबॉल। फैंस को लगता है, फैंस को समझाया जाता है, फैंस समझ लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। हाँ, दूसरी जो पॉइंट है कि प्रैक्टिस मैचेस पे है, व्हेन द कोच साइंड ऑन द डॉटेड लाइंस, कोच को पता था कि क्या सामने हमारा स्कीम है और क्या हम लोग को बोला गया इंटरव्यू पे भी और बाकी हम लोग कम्युनिकेशन पे भी सुने हैं कि बोल दिया गया है, मैं समझाया गया है, हम डायलॉग पे गए हैं, तो अभी हम लोग को कंप्लेन करने का कोई जगह नहीं है। किसी और से भी कंप्लेन करवाए तो कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 पॉइंट, देयर आर बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस मैचेस, देयर आर डिमेरिट्स ऑफ प्रैक्टिस मैचेस। मैं आपको बोल दूं,
2019 पे, this is my personal opinion and after chat with lot many technical experts with the team, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ मेरा ये बात वो लोग माने थे। ओमान के साथ जब हम गोललेस ड्रॉ किए थे प्रायर टू द 2019 एशियन कप, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन था, ओमान मैच मत खेलो, मैंने मना किया था। दिस इज जस्ट, ये नहीं कि मेरी बात लोग मानेंगे, ची ची ची, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मैंने बोला कि ओमान मैच खेलने से क्या होगा, आपको 4 मैचेस खेलना पड़े 12 से 15 दिन में एट दैट इंटेंसिटी जो हम नहीं खेलते हैं। You'd get, there's chances of us getting drained out for the last group league match against Bahrain जो हुआ था, माने थे people, the two people who matter in the technical team, नाम नहीं लूंगा, माने थे we shouldn't have played that Oman match because 90 minutes extreme high intensity में players गया था, so you are preserving that energy, because against Australia and Uzbekistan we would only be chasing and running at an running, सिर्फ jogging नहीं, running like dogs as Stephen Constantine used to say, हाँ हमें सिर्फ कुत्ते की तरह भागना पड़ेगा, एंड रिकवरी टाइम इन बिटवीन द मैचेस कम होगा। ये ना बोले दे आर मच मोर फिजिकल देन अस, मच मोर बेटर टीम देन अस, टेक्निकली हम लोग को इधर उधर करेंगे, इसके मतलब ये नहीं हम लोग को चांसेस नहीं है, एंड इवन सीरिया वुड बी फिजिकल। सो देयर आर मेरिट्स एंड देयर आर डिमेरिट्स ऑफ ए प्रैक्टिस मैच हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। एज आई सेड, आप किस नजरिया से इसको देखना चाहते हो और लोगों को समझाना चाहते हो। ओके, निरंजन द बिग फैन, आदित्य नारायण जो है आपके बिग फैन है, वुड लाइक टू नो मोर अबाउट रियल कश्मीर, व्हाट इफ दे क्वालिफाई आईएसएल एंड वी सी मैचेस इन द टफ स्टेडियम श्रीनगर, सो उनको जानना है श्रीनगर के बारे में एंड रियल कश्मीर के बारे में, एंड ही इज अ बिग फैन बाय द वे, होपफुली यू माइट हैव सब्सक्राइब्ड, बोल दादा बोल नहीं किया है तो पिन कमेंट में जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, 1000 इज नियर, लेट्स मेक इट। अरे आदित्य जी, थैंक यू सो मच। हम आपके तरह ही है, फैन फून कोई बनना नहीं है, वी आर ऑल फैंस टुगेदर इन दिस जर्नी, वॉकिंग द पाथ टुगेदर। बट ये जो आपने पूछे टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, हाँ यहाँ बैठ के टिप्पणी मारना, मैं मारूंगा भी नहीं और मारना सही भी नहीं है। क्या होएगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, because there are certain other lot many things that needs to be balanced out, and I believe a decision would be taken after a meeting and discussions with all relevant stakeholders. तो मैं यही बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं आई एम नॉट इन एनी पोजीशन टू बी कमेंटिंग ऑन दिस राइट एट द प्रेजेंट मोमेंट। What do you think about न्यू कोचिंग स्टाफ जो कि अभी रिसेंटली हमारे सिंक्लेयर जो हैं ऐड हो चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, सॉरी इंडिया टीम के लिए, एशिया कप के लिए, विल ही बी आल्सो कोचिंग staff for World Cup qualifiers or only Asian Cup? Do you think it's good to for NT or just fooling the investment? क्या लग रहा है कि बहुत लास्ट मोमेंट में 2 वीक से हम लोगों ने एक कोच हायर कर दिया और सडनली कुछ मिरेकल होगा, और हाउ डू यू सी, और इज इट जस्ट वन स्टेप? देखिए, इस क्वेश्चन का सबसे अच्छी बात जो था ना, वो अच्छा ये लगा कि आपका मुंह से वर्ल्ड कप निकल गया, एशियन कप नहीं का, आपका मुंह पे घी शक्कर पड़े प्रोफेसर साहब पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरी दुनिया आपके लिए घी और शक्कर लेके आ जाएगा, भारत का 140 140 प्लस 1.4 बिलियन पीपल प्लस लेके आएगा। देखिए, ये तो हाँ, इसके लेकर बहुत चर्चा आ रहे हैं कि मिस्टर ट्रेवर सिंक्लेयर को लिया गया है, हाँ, जिसका कोचिंग पेडिग्री उतना है नहीं। हाँ, विकिपीडिया पे ही हम लोग को सबसे पहले, मे बी विकी नाम जानता था, थोड़ी सी मैचेस शायद देखे थे, मे बी विकिपीडिया देखे, आप भी देखे, जो सवाल पूछे आपकी भाई साहब का नाम भूल गया, आई बिलीव ही एंड शी आल्सो, सभी लोग देखे, नॉट मिस्टर मरवन, नॉट मच ऑफ ए कोचिंग पेडिग्री, बट कुछ सोच के लिया गया है, मैं यही सोचूंगा। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स। एग्जैक्टली क्या है, सुन रहे हैं कि सेट पिच मूवमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली गिवन द ऑपोजिशंस दैट वी हैव, सेट पीसेस हम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होएगा, हाँ, मींस वुड बी अ ह्यूज टूल फॉर अस टू स्कोर, बिकॉज ओपन प्ले में अगेंस्ट उज्बेकिस्तान और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, व्हिच आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट मैचेस, मे बी द टूर्नामेंट एंड्स फॉर अस इवन बिफोर इट बिगिंस, हाँ, टचवुड ऐसे ना हो, तो दैट्स अ राइट इनिशिएटिव, बट इतने आपकी टाइम पे कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन इस कैंप में क्या होगा, पहले तो आपको कंडीशनिंग करवाया जाएगा, बिकॉज जो भी आईएसएल है, हाँ, दे आर कमिंग एट अ लेवल ऑफ आईएसएल, बट इस इंटरनेशनल फुटबॉल ऊपर है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द आईएसएल क्लब्स, आईएसएल की इंटेंसिटी इज गुड इनफ, बट
यहाँ पे और भी, और वी आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान। तो उस लेवल पे पहुंचना है आपको, टैक्टिकल एक्यूमेन और को रिफर्बिश करना है, जो इतने 5-5.5 साल से इगोर स्टीमाश करवा रहे हैं। तो प्लेयर्स को उतना टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, एंड वर्क ऑन दी सेट पीसेस। तो इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस, बट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कोच आई एम नॉट अवेयर, बिकॉज विकिपीडिया हमको वही कह रहा है। वही हाँ, कर सो रहा इफ है, सेट पीसेस कोचेस, मुफ्त में कोई कोच नहीं आता है। नहीं आता हाँ, है, आई बिलीव ऑब्वियसली उसको जरूर पेमेंट इन्वेस्टमेंट। किया गया है, बट हाँ, कोच के साथ जब कॉन्फिडेंस है, बिकॉज द कोच चूजेस इज कोचिंग स्टाफ। हम और यस, ऐप और नहीं AIFF नहीं, owned, because that's एम्बिट in नहीं his कर contract. सकते। Yeah, that's in his contract, and all for the right reasons. So Yeah. we have to trust the coach and back the coach for that. Why not? ओके सर, क्लाइमेक्स लॉरेंस कैसे प्लेयर थे? ओए होए 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 ओए होए 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 होए, सर जी क्या प्लेयर था, क्या प्लेयर था। हाँ, क्लाइमेक्स लॉरेंस का जो इनफैक्ट तो सीक्रेट निकल गया कि बोल दादा बोल का मैं क्लाइमेक्स का कमिंग इनटू द नेशनल टीम में मैं एक एपिसोड करने वाला था, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, हाउ डिड ही चूज हिम। Stephen told me a very lanky guy came in and one tackle he took the playmaker out. उस फ्रेम में उसको जैसा टैकल करना क्लाइमैक्स लॉरेंस का जैसा आज के दिन पे कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बॉल लेके आपके पास ओपन हो सकता था, उसके पास टाइम होता था। हाँ, टिपिकल क्लासिकल जो बॉल होल्डिंग मिडफील्डर था, बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। अब जब भी मिडफील्डर लेके बॉल आए, आप सॉरी मिडफील्डर सेंट्रल डिफेंडर लेके बॉल आए, आपको देखेगा कि सिर उठाएगा तो बगल में क्लाइमेक्स लॉरेंस खड़ा है, फ्री खड़ा है। हाँ, वो क्लाइमेक्स लॉरेंस बॉल लेके आपको वापस नहीं देगा, आगे बढ़ाएगा। Majority of the times, central defender to central midfielder to the left wing back to the central defender to the goalkeeper to the right back to the central midfielder again, central midfielder to the central defender। फिर इस टाइम पे प्रेस हो गया, लंबा खेल दिए, हम लोग को समझा दिया गया, फैंस को, हम तो 10 पासेस खेल रहे हैं, ऐसे 10 मूवमेंट हो गया तो 100 पासेस हो गया। इंटेंसिटी क्या बढ़ा, क्लाइमेक्स लॉरेंस माय क्लास। इनफैक्ट दैट टीम ऑफ 2011, हाँ जब ये बात उठा है, हाँ ये दैट टीम ऑफ 2011 का जो टैलेंट था, इफ यू टैलेंट वाइज इफ यू बैलेंस 2011 with 2015 and 2011 with 2019 and 2023 Asian Cup squad, 2011 stands out, हाँ stands out। And even the 2002 का जो LG का बैच था, which was the nucleus of the 2011 बैच। आप एक महेश गावली, दीपक मुंडोल का ऑल इंडिया सेटअप पे, मींस ऑल टाइम इंडिया 11 पे शायद महेश गावली तो चांस कर ही लेगा, दीपक पाऊ को भी खिला लोगे। सुरकुमार सिंह, समीर नायक अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए, स्टीफन डायस, क्लाइमेक्स लॉरेंस, एनपी प्रदीप, बाईचुंग भूटिया, एक रेनिडी सिंह, बाईचुंग नहीं खेल पाया, यंग सुनील छेत्री। लोग अभिषेक यादव के नाम पे बोलते हैं, अरे भाई उतना स्टडी कोई सेंट्रल हम लोग को स्ट्राइकर दिखा दे। Obviously, not to forget the one and only one of my favorites goalkeeper Subroto Paul, जो एक इंटरनेशनल मैच पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, गोल्डन जनरेशन ऑफ द सॉकर, उसके अगेंस्ट उसने वो परफॉर्मेंस करके लाए, कोई इंडियन प्लेयर नहीं कर पाए उस लेवल पे। आप याद रखिएगा, उस लेवल पे अभी तक कोई भी इंडियन फुटबॉलर उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। मैं किसी का मींस छोटा नहीं करके बोल रहा हूं, नहीं कर, he stood यस, out against the classiest of the oppositions, जो 11 का 11 ईपीएल खेलते डायरेक्ट आके आ गया। उस दिन अकेला सुब्रतो पाल नहीं होता तो हम 10 गोल खेलते। वो टीम का क्लास ही अलग था। इवन ए महराजुद्दीन वादू, हर कोई जगह में उस दिन सुब्रतो बोल, हर कुछ जगह में सेकंड बॉल महराज है, स्टडी, हाँ हैंडसम था, वो अलग कहानी था महराज का, स्टडी था, फाइटर था ऑलवेज। एक राकेश मासी जो ज्यादा खेले नहीं थे, ओ माय गुडनेस, एक गोविंद सिंह जैसा आप डिफेंडर बैठे थे। इट्स अनफॉर्चुनेट गोविंद डिड नॉट प्ले फॉर इंडिया। आई वाज अ बिग फैन ऑफ क्लास ऑफ 2011, बिग फैन। एंड इवन दैट क्लास ऑफ 2002 जो एलजी कप जीता था, इनमें से तुम्बा सिंह वन ऑफ माय फेवरेट्स, द एवरग्रीन सनमुगम वेंकटेश, जो ये लोग को खेलते हुए देखे है भाई साहब, उनकी आंख दिल खुश होकर पड़ी है। पीपल हु हैव वॉच्ड आई एम विजन इवन ड्यूरिंग द फैग एंड ऑफ देयर करियर, it's they were of a different level। आप सुनील छेत्री को ही पूछ लीजिएगा, हाँ कि क्या है ना, हाँ यस, क्या है ना। So these are different, they were a different class altogether। इनके गाइडेंस नहीं मिला, इनको कोई बोलने वाला नहीं मिला क्या खाना चाहिए। एक बाईचुंग भूटिया एट हिज प्राइम,
आज के आईएसएल पे वो 8 से 9 से 10 करोड़ रुपया लेके चला जाता। हाँ, हिज फ्लेक्सिबिलिटी, हिज गोल पोचिंग एबिलिटीज, बाईचुंग भाई को यदि मिलता गाइडेंस, यू वुड हैव प्रोलॉन्ग्ड हिज करियर। बाईचुंग भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के साथ आके मटर पनीर से रोटी खाते खाते गप मारते थे। आज के दिन पे कैन यू इमेजिन अब्दुल सहाल ईटिंग मटर पनीर विथ रोटी एट बटर नान? नहीं। मैं सुनील छेत्री का नाम नहीं लिया। और प्रीतम कोटाल बोलेगा नहीं दादा आप खाओ, हाँ मैं तो भूख नहीं लगा है। हाँ, because they are conscious, they know what to do, what not to So do. they were unlucky. They did not get the guidance. Oh my goodness, climax Lawrence, so sublime. True. India needs Manpreet Sakaria. What is your take on? देखिए मैं तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा। नीड्स तो does मनप्रीत सकारिया नीड इंडिया? Yes. लेट द क्वेश्चन बी आस्क्ड द अदर वे अराउंड। मनप्रीत सकारिया है जो भी है, they have been saying we want to play for India. If you want to play for India, भाई you are a player of much repute. You need to abide by the law. Simple. तभी ना आपके बारे में बात करे, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। And not demeaning him. हाँ, he's of a different level. मैं उनको स्टडी किए, फॉलो किए। हाँ, but does he need India? If he doesn't, then it's a futile discussion. मोहन बागान ने कंसीडर किया 1 गोल एंड आपने देखा होगा मोहन बागान थोड़ा फॉर्म में डीप हुआ है। हाउ डू यू सी कि मोहन बागान अंडर जुआन, हाउ अगेन दे आर आउट फ्रॉम एएफसी कप, जो कि बहुत एक्सपेक्टेशन था। इवन एज ए ओडिशा एफसी फैन आई नेवर थॉट कि ओडिशा एफसी विल गो थ्रू इफ मोहन बागान एंड एवरीवन इज देयर, बट they did it. So how do you see what has been going through with such a huge investment? There have been some injuries which have hit them hard. And a kind of a set 11 in Bagan has never been the case ever since Mr. Ferrando took over. I'm not doubting his coaching prowess. I'm not a coach at all. This is just a kind of an observation as a fan. It's not the set 11 that plays every day. Obviously, I do understand that teams need to be chosen as per the opposition. बट आपको यदि इतनी कॉन्फिडेंस है तब आपको हर कोई मैच निकालना पड़ेगा। दे हैव हैड सक्सेस, इन द पास्ट दे हैव हैड सक्सेस, बट दिस टाइम इट्स not working for them. It's a extremely big budget team. If you ask me, you need not be spending that much in the Indian domestic. You can easily invest in a state like Bengal or a state like Kolkata, where there's huge amount of raw talent available. There's someone lazy enough, or maybe not with the right kind of vision, who's not willing to go out and spot and scout and coach that talent. Someone needs to tell Mr. Goenka, Sarji, you need not be spending this much. A peanut of that, please allow us. And I am sure he won't be saying no. People are maybe so much hell-bent on the domestic success at the top level. They are kind of ignoring. They have an academy, but it's a kind of, I would say, not of the same level or intensity or of the interest as the Mohun Bagan Super Giant senior team is. They should be leading from the front. They have been a management who have been given full support to the team. Coach Aswan ka chand mange aap chand de do. Jo mange. They had teams which could have won the AFC Cup for the last 2 years. That way, I think so. That's where Bagan's interest should be now. I won't say interest. Bagan's preference need to be there. Preference should be, absolutely. Either Naranji jo correct kar rahe ke he is saying that imagining a ISL game in Srinagar in a snow, and one more thing, in real Kashmir with snow leopard, how beautiful it would be. Aditya ji, I guess that's a picture from a tea garden lag raha hai, pata nahi. So from the hills इकट्ठा चलते हैं आप और मैं, थोड़ी खाना शाना भी खाएंगे, गपशप मारेंगे, रियल कश्मीर का मैच देखने, क्यों नहीं। बस आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आप कमेंट्री में क्यों नहीं ट्राई करे आईएसएल में। अरे भाई साहब, कोई नहीं दिया है साहिल भाई, कोई कमेंट्री नहीं करने दिया है, मुझे बुलाए नहीं। So no idea. Thank you so much, but no, I have not got any openings for that. It's as simple. कौन बेटी है क्या? Yes. भाई बोल दो। क्या नाम है? What's your name? देवांशी। बाय क्या? अभी तो हाय बोलने का टाइम है, बाय बोल रहे हो। Okay. बस. Okay, I'll take few more questions then we'll leave. देवांशी भी सोच रही है, अरे पापा किस बुड्ढे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। दिस इज प्राइम टाइम, जब मेरे से बात करना था, खेलना था, पापा यही पूरी दिन YouTube में लगे रहते हैं।
The true Indian football fan, he is passionate about you. It is very entertaining. But when we talk about 2011, he is very happy man and made for the football. So you are becoming so emotional when talking about 2011 team and describing them. It is really looking good to see you that you are made नहीं, for the football. अरे मोहंती साहब थैंक यू सो मच बट इट्स नॉट जस्ट 2011 में 2011 थोड़ी इमोशनल इसीलिए हुआ था उम्र कम था हाँ दे वर ऑफ माय एज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स सो द Mm, कनेक्ट वाज मोर हाँ उनको बचपन से खेलते हुए देखा था बट एंड mm, most of the fans I understand on the digital and the social media platforms have not been lucky enough to watch them play तो जितनी mm, ज्यादा उनके बारे में मैं डिस्क्राइब कर पाऊं हाँ उतनी अच्छा है इसीलिए 2011 2002 के बारे में पैशन थोड़ी ज्यादा आ जाता है बट दी 15 एट 2019 एंड द 23 बैच आर in terms of quality no less an Anirudh Thapa or a Liston Colasso or a Brandon Fernandez or an Abdul Sahal, Akash Mishra, a Gurpreet Sandhu are equally as good. They have been lucky. They have been born in an era where they are being watched much more than a yes, Climax Lawrence or a Stephen or a Venki or even a Baichung Bhutia. true. But people have not watched Climax Lawrence play. Television was not there at prime time at that time. Yes, Nowadays, everyone is lucky to watch Jai Gupta play. Climax yes, Lawrence never had that benefit. that's a People did benefit. not watch Abhishek Yadav's prowess in the air. He Yes. won us. He has scored some 9 or 11 very Mm, crucial international goals. लोग बोलते अभिषेक यादव क्या प्लेयर था अरे भाई mm, साहब आप देखो उसने क्या क्या गोल किए हैं mm, 2002 का उसने रिकॉर्ड इंडिया का इंटरनेशनल स्टेज में तोड़ा था अभिषेक यादव का हेडर से द गोल्डन गोल सो पीपल वर नॉट लकी बिकॉज टेलीविजन था नहीं सोशल मीडिया I था नहीं, नहीं सो आई I आई नहीं. जेंस आई बिकम ए बिट पैशनेट स्पीकिंग अबाउट दैट True. आई एम आपके लिए विजयन आई एम विजय. विजयन माय Yes. My my. So I'm doing one on Bol Dada Bol very soon. It's recorded. I need to put it up. Match पे हो जाता है. Two instances of I am Vijayan. उसने दो बार ही बोला था मैच पे हो जाता है. हाँ कैसे हुआ मैच पे हो जाता है. हाँ ये पहले एक बार जिक्र की थी. That was I am Vijayan. हाँ match he was different. Another day he Mm, was different. It's a different. Vijayan I am Vijayan in his prime to me and players who have seen him and even coach Stephen Constantine was the best in Asia. I'm not kidding. I am not kidding. Late 90s ka I am Vijayan. My goodness. The खतरनाक. reason going back, the reason why we were able to beat 2002 UAE at the Kantirawa Stadium was I am Vijayan. कारण एक ही है उस समय एक विंगर आरसी प्रकाश वाज द विंगर तो सुकी जी बीइंग द टिपिकल कनिंग श्रूड मैन मैनेजर दैट ही वाज सुकी जी आईएम विजयन को फर्स्ट हाफ बिठा के आरसी प्रकाश को खिलाया था और Mm, बोले थे तुझे मैं खिला रहा हूं दोनों को दो बात बोला तुझे मैं खिला रहा हूं आईएम के विजयन की जगह तुझे विजय. विजयन की तरह खेलना और हाफ टाइम पे विजयन को जाके बोला तुझे मैं बिठाया चोट लगा है तो दिखा तो क्या कर सकते टोर अबाउट यू इन द सेकंड हाफ इट वाज आई एम विजयन हु गिव अस दैट विक्ट्री पीपल डू नॉट मेंशन दिस आई वाज लकी Yes. टू वॉच इट हाँ भाई साहब ये भाई आप हिल जाओगे ये हम हिल जाते हैं क्या है सर इज अ ट्रैफिक Absolutely. स्टॉपर आई एम विजयन आज के दिन में कैलकाटा या कोची या इंडिया कहीं भी खड़े हो जाए लोग अरे कौन आया है भाई चुम हाँ. Yes. Yes. It is there. Absolutely. आपके लिए सजेशन है कि नीरज सर, why don't you do a ISL post match live every match? मैं आंसर दे देता हूँ. He's pretty busy and it's very difficult. Even for me, sir, it's pretty difficult to slot our timing according to that post match. It's very 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 tough. So now again, the question goes to you कि आप ऐसे कर सकते हैं बोल बोल. भाई काश थोड़ी टाइम मिल जाता देयर आर अदर कमिटमेंट्स आल्सो हाँ. शायद करेंगे बाद में बट मे बी मैचेस ऑफ द एशियन कप बट स्टिल Last question before we said, ये question है, your best moments from FIFA World Cup commentary moments फीफा है क्या? वर्ल्ड कप कमेंट्री आपने, हाँ, आपके पास तो कमेंट्री आपने किया था कभी? नहीं मैंने कभी वो कमेंट्री नहीं किया आई नेवर डन कमेंट्री आई हर्ड कमेंट्रीज बट नो That assist from Randy the against Bahrain, a potential World Cup team. My goodness. Okay, ठीक है. I think we okay. नहीं सर जो है लाइक वेरी काइंड एंड वेरी हम्बल ऑलवेज. मुझे भी सर बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है नहीं बिकॉज हम मोहन लोग जी बहुत आपका तो एज
हमें पता नहीं है, बट यू आर ऑल्सो ए सर. ऐसे कुछ नहीं है कि टीनेजर है तो सर नहीं होता. इट्स नॉट सर नहीं बिकॉज ऑफ होता। द एज, बट बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट इन इंडियन फुटबॉल. इन a world there are so many attractions. You being a teenager, you are following this episode, following this podcast, और यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हो, that makes you this sir. It does not, the age does not make you a sir. You are Absolutely. sacrificing a match to watch us at the current moment. If you are Indian, we understand you are an Indian football fan. There are other also things which are going on. You are escaping your studies also a bit to watch us. Hmm. So that's the reason you are being called as sir. So thank you, Niranjan sir, for spending almost 90 minutes, which was very been fruitful because हमारे almost 1,000 Indian fan have been gone through this podcast and almost 60 to 65 likes we have got. It means it has been fruitful and they have been understood lot of few things which might be not clear to them. And please keep continue coming in and we'll love to see it, guys. Go ahead right now and check it out. Bola the ball वीडियोस की क्वालिटी एंड वीडियोस की कंटेंट ना कोई एजेंडा बेस नहीं है, रियल ट्रूथ फ्रॉम एक्स एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव बहुत ही सही रहता है। आप जाके चेक कर लीजिए, मैं तो बड़ा फैन, मैं वहीं से ही डेटा लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट एंड पिन कमेंट में है भाई, बस जाओ क्लिक करो, सब्सक्राइब करके आओ एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा आल्सो। आपका एक लास्ट लाइन बिफोर वी क्लोज आउट। Let's walk the path forward together. Asian Cup coming up. Big. It's a continental championship. However hard people may try to demean the significance and importance of the tournament, this is the World Cup for us. ये किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है कि या नहीं है. ये इंडिया की टूर्नामेंट है, देश की टूर्नामेंट है. हाँ, और ये हम खेलेंगे. And the players will be trying out their best. I only hope the players are equally motivated as much they were in 2019, because going into 2019, the mood in the camp was that samne le aao, bring them on, was when right from the moment they assembled, when the kit shoot took place. Yes, And yes, then we had the photo shoot right from the each and every one. I remember a very, very young kid, Abdul Sahal, whom I personally met for the first time, was very kind of, I won't say sad, but a bit dejected कि उनको chance नहीं मिला 23 में. I remember talking with him, अरे भाई तेरा आपका time आएगा भैया, चिंता मत करो. He said, I'll do my best. He's his first Asian Cup. And from that time, the confidence in that Stephens team was Leah. Bring yeah, them on. We are there. done. This is our moment. And entire Asia knew, okay, India have arrived. So True. let's see. Let's see. लेट्स सी, Let's लेट्स see. होप फॉर द बेस्ट एंड डू वेल एंड लेट्स सी किस तरीके से इंडिया टीम इसको इस चैलेंज को लेती है। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन एंड सी यू अगेन एंड थैंक यू गाइस, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग बोला दा बोला, डोंट फॉरगेट दैट। चलो बाय, जय हिंद, टेक Thank you. केयर। Bye bye. Good night, everyone. Good night. Bye bye.